Hello guys, welcome back to Curious Series for another live watch along of AFC Asian Cup. It's a time for India versus Uzbekistan. तो कैसे हो आप सब लोग और क्या हालचाल और क्या नर्वसनेस है, क्या एक्साइटमेंट है, बता दीजिए। हमारे साथ ईगोस्ट टीम में जुड़ चुके हैं। अरिजीत सिन्हा बोल रहे कि सीरिया इज टफ, वोंट बी इजी फॉर इंडिया टू बीट देम। ऑब्वियसली भाई, रिसे अभी जस्ट उन्होंने मैच फिनिश किया है ऑस्ट्रेलिया के सामने 1-0 से ही वो आ रहे हैं, बट थ्रू आउट द गेम दे वर इन द गेम एंड कपल ऑफ चांसेस उन्होंने भी क्रिएट किए। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी भाई। ईगो स्टेमिच बोल रहे हैं लाइनअप के बारे में भी भाई डिस्कस करते हैं अभी। जस्ट जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट। भाई सीरिया जीडी बेटर, दे आर जस्ट लॉस्ट 1-0, बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू बीट देम. Syria is beating India too, in my opinion. Real quality, definitely there is a real quality. Some of their players are really really good. Sagar Ravindran बोल रहे कि just came here to tell everybody Syria is not going to be easy or cakewalk. बिल्कुल completely agree on that, Sagar bhai. I think 100% agree, and it is going to be big challenge. But first I think Uzbekistan is our challenge, and अगर यहाँ पे हम अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेके उस मैच में उतरेंगे, तो आई थिंक वो कब सबसे ज्यादा क्रूशियल रहेगा। एंड उसके बारे में बाद में आई थिंक वन मैच एट अ टाइम हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड तीनों के तीनों मैचेस हमारे लिए टफ ही होने वाले थे, तो इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी। हेलो भाई, ज्वाइनिंग फ्रॉम नैनीताल। अरे बढ़िया भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग भाई, क्या हाल चाल है। वैदिक भाई बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जस्ट स्कोर्ड ओनली वन, आर दिस जस्ट आर इज जस्ट दे गोट। नो नो भाई, आई थिंक वैदिक भाई आज भी इरविन ने उसको बचाया, मतलब ऑस्ट्रेलिया को वो क्रूशियल गोल 59th मिनट पे करके दिया। बट आई थिंक जो ये ऑस्ट्रेलियन साइड है, दिस इज नॉट यू कैन से कि प्राइम ऑस्ट्रेलियन साइड की जो मतलब सच में मतलब टाइटल कंटेंडर लग रही हो आपको, जिस तरह की वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं। बट आई थिंक सीरिया पुट अप आल्सो वेरी गुड फाइट एंड कपल ऑफ चांसेस उन्होंने भी बनाए। थापा इज गोना स्विच बिटवीन नंबर 8 एंड 10 रोल। यस, लाइनअप गाइस आ चुकी है हमारी। गोल में है गुरप्रीत सिंह संधू। बैकलाइन हमारी है यहाँ पे, जो लास्ट मैच में थी वही, उसमें एक चेंज हुआ है। यहाँ पे सुभाषिस बोस की जगह पे आकाश मिश्रा आ चुके हैं। सो आकाश मिश्रा, निखिल पुजारी एज ए फुल बैक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे जो दोनों सेंटर बैक है वो है यहाँ पे राहुल बेके एंड संदेश जिंगान। मिडफील्ड में यहाँ पे दीपक टांगरी बाहर चले गए हैं, और उसकी जगह पे यहाँ पे आई थिंक अनिरुद्ध थापा की वापसी हो चुकी है, तो अपुया अनिरुद्ध थापा एंड आई थिंक सुरेश वांगजाम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फ्रंट थ्री है हमारे यहाँ पे मनवीर सिंह, सुनील छेत्री एंड नौरब महेश सिंह। तो क्या बोलते हैं कि ललेंजोला चांगते इज ऑन बेंच, सो वो बेंच से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वोट गेम प्ले सीरिया, बिल्कुल बिल्कुल भाई। सीरिया को हरा दिया, बिल्कुल 1-0 से हार गए हैं वो। लेकिन बड़े मार्जिन से हारते तो ज्यादा फायदा मिलता हमें। बट I think let's see why not Brandon Thapa is not number 10, बट आउट एंड आउट नंबर 10 प्रोफाइल उसको नहीं चाहिए होगी। आई थिंक गेम स्टाइल में उसको थोड़ा सा नंबर 8 टाइप ऑफ प्लेयर चाहिए कि जो मतलब बॉक्स टू बॉक्स हो। दैट्स व्हाई ब्रेंडन के ऊपर थापा को यहाँ पे चूज किया गया। और मैंने बोला भी था प्रीव्यू में भी कि चाहते तो हम ब्रेंडन को है, लेकिन जाएगा ईगोस्ट मैच थापा के साथ, तो दैट इज द केस। प्रणब दोले बोल रहे कि इन विच चैनल लाइव टेलीकास्ट, स्पॉट 18 पे आएगा भाई लाइव, एंड डीडी स्पॉट के ऊपर भी आएगा। ऑस्ट्रेलिया जस्ट स्कोर 1। अच्छा, ये ले लिया था। हेलो, कैसे हो लॉर्ड पोनी सुपरस्टार भाई। जय हिंद, जीत जाएगा आज बिल्कुल भाई। सीरिया इज हार्ड, बिल्कुल हार्ड, बहुत ही हार्ड भाई। इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट टीम इन एशियन कप, नो कैप। अच्छा भाई, देखते हैं आज कैसा परफॉर्मेंस देते हैं भाई। केटेनिच चेंजेस इज सेटअप टू 4-2-3-1 फ्रॉम बैक थ्री। यस, आज थोड़ा सा ऑफेंसिव उन्होंने, आई थिंक जो उन्होंने भी जो स्टार्टिंग 11 है उसमें चेंजेस किए हैं। अगर स्टार्टिंग 11 आ चुकी है, या मतलब वैसे तो आ चुकी है, लेकिन आई थिंक ग्राफिक्स अगर उसका आ गया है, सो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ उसका। तो देयर आर 3 चेंजेस आई थिंक फ्रॉम द लास्ट। यस, आ चुका है। 1 सेकंड, मैं शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ। चलो भाई, शेयर द स्क्रीन। चलो एक सेकंड। हाँ, तो दिस इज द लाइन गाइस, एज यू कैन सी। मिडफील्ड में आपका कॉम्बिनेशन है सुरेश वांगजाम, अपुया एंड अनिरुद्ध थापा। तो टांगरी की जगह पे सिर्फ थापा आए मिडफील्ड में। फ्रंट लाइन में चांगते की जगह पे नोरेम महेश आ चुके हैं, एंड बैक लाइन में सुभाषिस बोस की जगह पे आकाश मिश्रा आ चुके हैं। तो तीनों ऑफेंसिव चेंज है आप बोलेंगे, क्योंकि बोस भी थोड़ा सा आपका डिफेंसिव फुल बैक है, तो उसकी जगह पे आपने क्या बोलते हैं ऑफेंसिव फुल बैक आकाश मिश्रा को डाला है। मिडफील्ड में आप देखें तो दीपक टांगरी और डिफेंसिव मिडफील्डर, उसकी जगह पे आपने थोड़ा सा नंबर 8 प्रोफाइल डाला है अनिरुद्ध थापा को। एंड फ्रंट लाइन में चांगते की जगह पे आपने नौरब मैच से स्टार्ट किया है। सो आई थिंक ऑल दी आउट ऑफ 3 चेंजेस 2 आर दी, यू कैन से कि ऑफेंसिव चेंजेस आप बोलेंगे। सो लेट मी नो आप क्या सोचते हो इस लाइनअप के बारे में। निपन भाई बोल रहे हैं आई होप इंडिया विन द मैच।
लेट होप सो भाई, लेट होप सो। एंड गाइज जो भी लोग जुड़े हो यार, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, 9,000 में सिर्फ भाई 90 सब्सक्राइबर हुए हैं हम। सो जल्दी से भाई, आई थिंक 90 पीपल आर वाचिंग, तो भाई जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से भाई सब्सक्राइब ठोक दो एंड जल्दी से भाई 9 के करवा दो। तो आपका सपोर्ट भाई जरूरी है, सो बिल्कुल सपोर्ट शो कीजिए। इफ इंडिया ड्रॉ देन सीरिया मैच विल बी नॉकआउट फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लेइंग 11 आई थिंक दिखा दी है, उनका स्ट्राइकर स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल उनका मेन स्ट्राइकर नहीं है, तो आई थिंक लास्ट मैच में वो फॉल्स नाइन के साथ गए थे, बट आई थिंक आज आज प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ वो उतरे हैं। Australia is not title contender this year, obviously भाई। कंचन कुमार भाई, हेलो ब्रो, हेलो। इंटेल पाक फुटबॉल बोल रहे हैं कि उज्बेकिस्तान वर्सेस ईरान देखा आपने, ईरान हैविंग ए क्वालिटी प्लेयर्स लाइक तेरेमी अजमाउन एटसेट्रा, फिर भी उज्बेक एनी हाउ ड्रॉ ईरान। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आई थिंक वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात कर रहे हो आप, 2-2 से जो ड्रॉ किया था। ब्रेंडन वाज सपोज्ड टू स्टार्ट टुडे, ईगो डिसाइडेड टू गो विद थापा लास्ट टाइम डिस्टेंस। आई थिंक वो सारी स्पेकुलेशन होती है भाई, वो 100% श्योर नहीं होती है, तो आई थिंक थापा, आई थिंक Igor always choose Thapa over any other midfielder, so that's the case भाई। Vikram Sahal list not included in match day squad, should have dropped Udanta and included Vikram, agree। I think ये पता, ये मतलब that's surprising for me also, विक्रम को क्यों उन्होंने ड्रॉप कर दिया, स्क्वाड की बेंच पे भी नहीं है वो। एंड सहल तो इंजर्ड है, समझ में आता है। लिस्टन भी नहीं है, सो दैट्स इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि लिस्टन का काफी ज्यादा यहाँ पे स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि भाई मे बी लिस्टन यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हैं, तो उतना ज्यादा चांस दिख रहा था, बट वो बेंच पे भी नहीं है। सो दिस 3 प्लेयर्स आउट ऑफ 26 has been left out, and 23 players आपके यहाँ पे रहेंगे। बेट्सो वेड ऑस्ट्रेलिया स्कोर 1 गोल ओनली, यस। सीरिया टो टू टो खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसने मैच देखा वो पता, बिल्कुल बिल्कुल टो टू टो खेला। एंड दे क्रिएटेड अ कपल ऑफ वेरी गुड चांसेस। फर्स्ट हाफ में वो जो पहला शॉट लिया था सीरिया ने, वो जो पोस्ट पे हिट किया, दैट वाज अ ब्रिलियंट शॉट भाई, ब्रिलियंट शॉट। एंड दे क्रिएटेड सम गुड चांसेस आल्सो। अब बस इंडिया को उज्बेकिस्तान या सीरिया से एक मैच जीतना है बस, चाइना भी आउट हो गई है। आई थिंक यस, चाइना आई थिंक मे बी 2 पॉइंट ही ले सकते हैं, तो एक टीम आपकी ऑलमोस्ट मतलब जो थर्ड पे फिनिश करेगी, अगर फिर भी वो नहीं कर पाएगी, सो आई थिंक विथआउट एक विनिंग अ मैच, आई थिंक इंडिया इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई, सिंपल एज दैट। दोनों मैच अगर हम ड्रॉ भी करते हैं तब भी हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। एंड अगर हम क्या बोलते हैं कि आई थिंक मे बी 2 पॉइंट्स होंगे हमारे, बट आई थिंक जीडी में कहीं ना कहीं हम मात खा जाएंगे, यस, क्योंकि सीरिया का जीडी हमारे से बेटर है। सो आई थिंक वी नीड टू विन द एनी हाउ वन मैच भाई। बोला था ना अपुया थापा और सुरेश खेलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भाई अनुराग भाई। आई थिंक बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरी ब्रेंडन मैच आता था ब्रेंडन, बट इगो स्टिमिच को हम सबको पता है कि लाइक्स टू प्ले थापा, सो ऑब्वियसली भाई। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक गोल मारा, वो भी लक कह सकते हो। आई थिंक वो भी उतना ज्यादा कन्विंसिंग गोल नहीं, बट आई थिंक दैट्स द प्रेजेंस ऑफ माइंड बाय जैक्सन इरविन इन द बॉक्स। अब लाइनअप देखो, कल से कंपेयर करके बताओ कितना अलग है। आई थिंक मैंने यार लिखा तो आई थिंक बैक लाइन तो सेम है, आई थिंक फ्रंट लाइन भी मेरी सही है, मिडफील्ड भी आई थिंक मैंने बोला था अपुया, आई थिंक सुरेश का एक नहीं बोला था मैंने, थापा अपुया एंड ब्रेडन बोला था शायद, तो एक ही मेरा प्लेयर भाई गलत है भाई। अब तो सीरिया से भी डर लग रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए भाई, दे आर क्वालिटी साइड, सो दे आल्सो गोइंग टू गिव अ टफ फाइट। ऑस्ट्रेलियन फिनिशिंग इज वेरी बैड टुडे, यस, सेम एज जब हमारे सामने भी थी। स्टार्टिंग दिखाओ, अच्छा। Hopefully Apuya and Suresh can provide something today. Yes, आज थोड़ा सा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, आई थिंक बिल्कुल अगर सिट बैक करेंगे then it is going to be a dead game for us. I think eventually we are going to concede. So I think वो तो डेफिनेटली अप्रोच रहना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पासिंग है हमारी जो वो बेटर करनी पड़ेगी। भाई लोग जस्ट फॉरगेट एशियन कप फॉर मोमेंट एंड कंसीडर नेक्स्ट 2 गेम्स प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स गेम्स। इन दिस गेम जस्ट शो अवर डिफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव गेम। आज ऑरेंज जर्सी पहने तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, आज मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा ऑरेंज जर्सी में आए, लेट्स सी। आज मिड ब्लॉक से जाना होगा एंड सेट पीसेस अपॉर्चुनिटी का भी उससे यूज करना होगा, बिल्कुल। फॉर्मेशन 4-2-3-1 रहेगा, यस 4-2-3-1 रहेगा भाई। We need to get some result today. It is a do or die for us. If somehow we get something against Uzbekistan, then it will make our match somewhat easier for us against Syria. Obviously, भाई कॉन्फिडेंस देता है ना, आप अगर सीरिया जैसे उज्बेकिस्तान जैसी टीम के सामने ड्रॉ भी प्रोड्यूस करते हो, that will be big boost for you to going into the next match of Syria. ईशान पंडित बेंच पे है, लेट्स सी उसको कितना मिनट मिलता है कि नहीं मिलता। हेलो भाई कैसे हो? अरे मैं बढ़िया हूँ भाई, चंदर यादव भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्रो।
बैलेंस लाइनअप है। यस, आई थिंक ऑफेंसिव ही बोलेंगे आप। आई थिंक आई वुड नॉट से इट्स अ डिफेंसिव लाइनअप। आई थिंक बिकॉज बैक लाइन में भी आप देखें दोनों ऑफेंसिव फुल बैक्स आप खिला रहे हो, मिडफील्ड भी आपकी पूरी मतलब आउट एंड आउट डिफेंसिव मिडफील्डर आप इसमें से किसी को नहीं बोलेंगे। मतलब पुया भी है जो कि भी मोर ऑफ यू की 6-8 का मिक्स प्रोफाइल है, इट्स नॉट आउट एंड आउट नंबर 6। सो आई थिंक अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो इट्स मोर यू कैन से अटैकिंग लाइनअप। इंडिया विल गो फुल अटैक। सीरिया का मैच देखा भाई, संजीव गेमिंग भाई दे पुट अप अ वेरी गुड फाइट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भाई। ब्रेंडन को खिलाना चाहिए था। मेरे मेरे हिसाब से अगर आपको क्रिएटिव प्लेयर चाहिए था, देन आई थिंक ब्रेंडन वुड बी अ गुड ऑप्शन। भाई सीरिया ने ऑस्ट्रेलिया ले लिया सामने, कितना अच्छा खेला, बिल्कुल भाई। अब बस इंडिया को उज्बेकिस्तान या सीरिया से एक मैच जीतना है, हम नेक्स्ट राउंड इजीली क्वालिफाई बस चाइना था परफेक्ट स्पॉट फैसिलिटी अच्छा भाई। उज्बेकिस्तान ड्रो मेक्सिको टू, यस यस भाई। सीरिया पीओए प्लेयर्स बहुत ही अच्छा है, सीरिया राइट बैक प्लेयर बेस्ट प्लेयर, ऐसा लग रहा था कि सीरिया की रैंक 35 के है और ऑस्ट्रेलिया का 50 प्लस। दे हैव क्वालिटी प्लेयर्स भाई। आप देखिए जिस तरह से वो पोजीशनिंग कर रहे थे अपने आप को, जिस तरह से डिफेंड भी कर रहे थे, एंड सब्स्टिट्यूशन भी आप देखे, दैट इज द एक्सपीरियंस कोच ब्रिंग्स भाई। हेक्टर कूपर इज अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस कोच, उज्बेकिस्तान के भी प्रीवियसली हेड कोच रह चुके हैं। वो देखिए आप, आई थिंक 68 मिनट के बाद उन्होंने तुरंत सब्स्टिट्यूट किया था, और फर्स्ट गोल जब उन्होंने कंसीडर किया उसके बाद आप देखिए कि 68 मिनट पे एक ऐसा चांस बना था ऑस्ट्रेलिया का कि वहां पे जो डिफेंड किया, इंटरसेप्ट किया, वो आपके जो सब्स्टिट्यूट थे उसने किया कि जिसके क्विक लेग्स थे, अदरवाइज वो बंदा वहां पे पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह का स्प्रिंट उन्होंने मारा वहां पे, एग्जैक्ट मेरे को याद है 68 मिनट पे वो मोमेंट हुआ था, एंड बॉक्स के अंदर था, एंड फ्री मैन था राइट साइड पे ऑस्ट्रेलिया का। तो अगर वो इंटरसेप्टर नहीं होता, इंटरसेप्शन, तो आई थिंक देयर विल बी ह्यूज पॉसिबिलिटीज कि वो गोल कन्वर्जन होता हो जाता। बट आपके क्योंकि आपने क्विक लेग्स वहां पे लाए हैं, देन वो इंटरसेप्ट करने में सफल रहा, और आपका जो एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था ऑस्ट्रेलिया का, उसको रोकने में कामयाब हुआ। कहीं ना कहीं इंडिया ने जो गलती की इन दी ऑस्ट्रेलिया गेम इस कि भाई आपके आपके प्लेयर की जो इंटेंसिटी थी वो डाउन हो चुकी थी, एंड 58 मिनट पे जब आपने गोल कंसीडर किया, उसके तुरंत बाद आपको सब्स्टिट्यूशन चाहिए थे, देन आपका जो सेकंड गोल है मे बी उसको आप अच्छी तरीके से डिफेंड में भी कर पाते। सीरिया मैच हार गया, यस भाई 1-0 से हार गया। राहुल केपी और उदांता सब में आ सकते हैं, आई थिंक दोनों में से कोई आ सकते हैं भाई। व्हाट इज द स्कोर लाइन नाउ सीरिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? इस मैच फिनिश हो गया भाई, इट्स 1-0 भाई, 1-0। भाई कमेंट बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड है भाई। महेश गोल मारे आज, बिल्कुल बिल्कुल भाई महेश को गोल मारना पड़ेगा। एक्साइटेड कैन ब्रेंडन कम्स इन सेकंड, आ सकता है भाई। सीरिया इज आल्सो स्ट्रांग साइड फॉर इंडिया, यस मंजित नेगी भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी। भाई यू आर कवरिंग फुटबॉल पे बैक इन Manipur just in the days, 7 days to police for farmers, one will volunteer. और मणिपुर टाउन ऑक्यूपाइड बाय म्यांमार मिलिटेंट्स, नाउ फुटबॉल विल नॉट कम बैक नाइदर। अच्छा भाई, ये अभी आई लीग का जो शेड्यूल हुआ है उसमें यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है दिस मैचेस, तो लेट्स सी किस तरह की सिचुएशन अभी होती है। सीरिया टेक्निकली ability and intensity far better because they're most of the their जितने भी लोग जुड़ रहे हो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना बोलो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो भाई। 9000 से भाई जस्ट आई थिंक 80-90 सब्सक्राइबर अवे है, तो जल्दी से भाई आपका सब्सक्राइब बटन को भाई तोड़ डालो। 4-3-3 खेलेगा इंडिया, नहीं नहीं 4-3-3 नहीं, आई थिंक इट विल बी 4-2-3-1। If we beat Uzbekistan, we can draw Syria. That's possible, but no holders needed. आज आप देखा भाई, आपने देखा भाई बड़े से बड़े कीपर मैथ्यू रायन से भी आज देखिए भाई होलर हो जाता, जिस तरह से वो सीरिया ने सेकंड हाफ में शॉट लिया, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग इनटू द गोल। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग हाउलर देन क्या बोलते गुरप्रीत सिंह संधू ने जो किया था। आईएसएल इंटेंसिटी इज नोवेयर नियर इंटरनेशनल इंटेंसिटी, बट वो इंटेंसिटी आपके प्लेयरों की वजह से ही है भाई। फॉरेन प्लेयर है तो आप कैसे भी बढ़िया प्लेयर ला सकते हो, आपके प्लेयरों का लेवल जब तक इंप्रूव नहीं होगा तब तक वो इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ेगी। तो उसमें गलती आपके प्लेयरों की ही है भाई, आपके प्लेयरों की वो क्वालिटी नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस इंटेंसिटी से पूरा आईएसएल चलेगा। प्रवीण गवनकर भाई बोल रहे हैं कि कैन ब्रेंडन गेट चांस टू प्ले इन सेकंड हाफ? बिल्कुल बिल्कुल, आई वांट टू सी हिम टू in the second half. India 4-2-3-1, yes. As much as I love Indian football, but the reality is हम दोनों मैच में पिटने वाले हैं। देखिए वो अंदर से तो भाई ऑनेस्टली तो हम सबको पता होता है, बट एज अ फैन डेफिनेटली आपकी टीम को हम सपोर्ट करते हैं। लोग बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया 25 रैंक है, नहीं खेल सकते एक्सेट्रा, वियतनाम सीरिया को देखो। हाँ, इंडियन प्लेयर टैंग तुड़वा के सुनील छेत्री को पेनल्टी किक दिलवा दे बस। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई फॉर राउंड ऑफ 16, यस ऑब्वियसली भाई 6 पॉइंट हो गए हैं, तो दे क्वालिफाई फॉर फ्रॉम दिस ग्रुप। तो नाउ लेट्स सी, इंडिया जीतेगा, यस इंडियन। अच्छा भाई
Even if we draw the 2 matches and went out in group stage, I will take it as a win for India. Good times me, remove me this mode, give me more. Acha. Suresh or Brandon, who is better? Right, though both are different profile players. Suresh is a more, you can say, ki number 8. Brandon is out and out number 10. So you can't compare both the players. India never lost in orange jersey. अच्छा ऐसा क्या फैक्ट है क्या? हेलो हेलो सोलो फ्रेम भाई, कैसे हो मेरे भाई? इज उज्बेकिस्तान इज प्लेइंग डिफेंसिवली? नहीं, आज आज थोड़ा सा ऑफेंसिव उन्होंने लाइनअप भी उतारा है. सो दे आर आल्सो गोइंग ऑफेंसिव. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी भाई. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अस नाउ. आई थिंक उनको भी, क्योंकि मस्ट विन गेम है भाई उनके लिए भी. उनके लिए भी ये गेम गेम मस्ट विन है. उसको भी जीतना ही है कैसे भी करके. भैया सीरिया बहुत अच्छा खेली, स्पेशली देयर डिफेंस. व्हाई नो ब्रेंडन स्टीवेंस डूइंग नथिंग इन ऑफेंसिव. देखते हैं कितना अब थापा कितना ज्यादा अटैक में कंट्रीब्यूट कर पाता है, थापा और ब्रेंडन. यस दीपक नेगी भाई, लेट्स गो इंडिया, लेट्स गो. बिल्कुल. फाइनल थर्ड पे शॉट ऑन टारगेट से उज्बेकिस्तान को डराना होगा. बिल्कुल बिल्कुल डराना होगा. टेस्ट तो करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज तो आप पूरा डिफेंस करोगे तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है भाई. आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट थापा और ब्रेंडन? ऑफेंसिवली भाई आई थिंक अगर आपको क्रिएटर चाहिए था, किस तरह का गेम प्लान है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा. अगर आपको एक आउट एंड आउट क्रिएटर चाहिए था, प्ले मेकर, देन आई थिंक ब्रेंडन वुड बी परफेक्ट चॉइस. पर थोड़ा सा आपको ऐसा भी प्लेयर चाहिए था कि जो थोड़ा सा ट्रैक बैक करके आपकी मिडफील्ड में डिफेंसिवली भी आपको हेल्प कर पाए. तो आई थिंक बॉक्स टू बॉक्स, देन आई थिंक थापा इज अ गुड चॉइस. वी नीड अपुया एज a 8, सुरेश एज a 6 एंड थापा स्विच 6-8. ओके. टेंगरी सफर लिगामेंट स्प्रेन और नो? अच्छा नहीं नहीं, वो भाई बेंच पे है, सो मे बी सेकंड हाफ में आ सकते हैं. नो चेंज चांगते थोड़ी. यस, चांगते भी फुल्ली रिकवर नहीं कर पाए, वो भी बेंच पे है. सो मे बी सेकंड हाफ में कुछ मिनट आपको खेलता हुआ दिख सकता है. आई हैव रियल डाउट्स विद थापा एज अ 10. थापा 10 तो नहीं खेलेगा, आउट एंड आउट 10 नहीं करेगा. टुडे मैच क्या होगा? संजीव गेमी भाई देखो, मेरा प्रेडिक्शन तो मैंने दे दिया था. रियलिस्टिक प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि वी माइट लूज बाय 2-0 एंड 2-0 या 1-0. एंड एज अ फैन आई वांट टू सी 1-1 ड्रॉ. सो दैट्स माय प्रेडिक्शन भाई. भाई आज सुनील छेत्री गोल मारेंगे पक्का. अरे भाई 94th गोल का वेट कर रहा है भाई हम. रोहित उर्वाते बोल रहे हैं कि इंडिया 4 पॉइंट्स लेंगे तो सेकंड नंबर पर जाएगी. बस उज्बेकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में उज्बेक हार जाना चाहिए. बाकी बाय द वे दैट मैच आल्सो गोइंग टू बी क्रूशियल. क्या बोलते कि क्रेजी मैच. भाई आई एम रेडी विथ माय काला जादू. अरे भाई साहब. टेक प्रो हर्ष बोल रहे हैं कि उज्बेकिस्तान डिफेंस इज लाइक कुवैत बट फॉरवर्ड्स आर टू गुड, सो इंडिया कैन स्कोर बट नॉट कंसीड. लेजेंड गेम प्ले भाई सीरिया. अजू बाबू मोहन तो भाई बिल्कुल भाई. भाई सीरिया का सारा टीम इज सब और ओरिजिन से वरना हुआ है. आई पर्सनली वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज इफ ही अरेंज 1 पॉइंट इन दिस एंटायर कैंपेन. भाई जो भी लोग जुड़ रहे हो यार, लाइक सब्सक्राइब ठोक दो यार भाई, ऐसा मत करो यार. सो सम सपोर्ट यार. उदांता लिस्टन और विक्रम से अच्छा है क्या? कोच को लगता है भाई, अब क्या करें. आज तो सब क्या बोलते कि सब टाइप के रन निकलने पड़ेंगे इंडिया को, जहां ओवरलैपिंग हो लेट रन इन दी बॉक्स हो, इन बैंड रन हो, या कोई भी टाइप का रन हो. बिल्कुल बिल्कुल. उज्बेकिस्तान 3-1. अच्छा संतोष करके भाई, जो भी लोग जुड़ रहे हो भाई, आपका प्रिडिक्शन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. व्हाट डू यू फील? एमडी जुबेर आलम बोल रहे कि यूनाइटेड एससी का पोस्ट देखा है क्या फेसबुक में, आई लीग 2 में क्या खेलने आई लीग 2 में खेलने के लिए पैसा नहीं है, विथड्रॉ करना चाहता था बट लास्ट में खेलने के लिए क्राउड फंडिंग का पोस्ट दिया है. कल वीडियो में बोलेंगे ब्रो. बिल्कुल बिल्कुल. ओके मैं चेक करता हूँ भाई. भाई कल कोई जरूरत नहीं है डिफेंसिव खेलने की. अगर बाहर ही जाना है तो एटलीस्ट ट्राई टू प्ले अटैकिंग. सर अफगानिस्तान ने भी ईरान उज्बेकिस्तान कतार के अगेंस्ट गोल मारा है, हमने नहीं कभी कभी नहीं. आज मैच रिजल्ट प्रेडिक्ट कीजिए. ये कर दिया भाई आई थिंक अभी. इंडिया 1-1 उज्बेकिस्तान और इंडिया 1-0 उज्बेकिस्तान. ओके भाई. उज्बेकिस्तान इज टुडेस मैच विन. ओके. हेलो. अच्छा. गोलकीपर्स इन टॉप लीग्स आर hyped as if put Lechempna there and there won't be much difference except ball distribution. इंडिया विल प्ले 4-3-3. अरे भाई और रैंकिंग इफ यू विन अगेंस्ट, हाँ मैंने देखा भाई विनीत लाखरा भाई 98 102 और डायरेक्ट 114. डेफिनेटली इसमें भाई बड़ी छलांगे ही मारनी है. यहाँ पे अगर आप जीतोगे तो भाई सीधा छलांग लगा के आगे चले जाओगे, हारोगे तो सीधा भाई नीचे. See how Syria played. We will not be able to beat them today. Draw is very important. Yes, draw for me is a win for us. For me अगर हम ड्रॉ करते हैं देन भाई मेरे लिए वो भी नहीं है. बिल्कुल भाई. लाइक की कर दीजिए भाई. 200 लाइक का छोटा सा टारगेट है भाई. लाइक भी ठोको यार. स्टिल अच्छा भाई. कल अच्छा ये ले लिया भाई. उज्बेकिस्तान का लाइनअप दिखाओ. अच्छा उज्बेकिस्तान का लाइनअप देखना है. 1 सेकेंड भाई, निकालना पड़ेगा मेरे को लाइनअप उज्बेकिस्तान.
का लाइनअप, इसको हटाना पड़ेगा देन। एक सेकेंड, उज्बेकिस्तान का लाइनअप आई थिंक अब तक तो आ गया है वैसे दोनों का। एक सेकेंड भाई, उज्बेकिस्तान भी थोड़ा सा ऑफेंसिव ही गई है, मैंने उसका तो कब का लाइनअप आ चुका था वैसे, बट आई थिंक अच्छा ये इंडिया का ही है यहाँ पे। 1 सेकेंड भाई, उज्बेकिस्तान लाइनअप कहाँ गई? ये रहा। अरे यार इधर भी इन लोगों ने बताया नहीं, क्या यार एक लफड़ा कर रहे हैं, इधर से मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ ये रहा, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। चलो उज्बेकिस्तान भाई साहब, हाँ दिस इज द लाइनअप ऑफ उज्बेकिस्तान भाई। आई थिंक नाउ विजिबल होगा आपको। इफ इंडिया विंस टुडे दे विल थ्रू टू राउंड ऑफ 16। 3 पॉइंट होंगे सत्यदेव जरिया भाई, फिर भी अभी मतलब शॉर्ट शॉर्ट नहीं होंगे, मैच मैच बचेगा। ये भाई डिफरेंस बिटवीन 4-2-3-1 एंड 4-3-3। 4-2-3-1 में भाई दो आपके होल्डिंग मिडफील्डर होते हैं, एंड 4-3-3 में आपका 4-3-3 में भी वो कॉम्बिनेशन वैसे हो सकता है, बट आई थिंक उसमें एक एक डिफेंसिव मिडफील्डर होता है, दो आप अब दो क्या बोलते हैं कि नंबर 8 प्रोफाइल के साथ जाते हो, जबकि इसमें एक नंबर 10 प्रोफाइल भी होता है। वो वांट टू सी, वो तो किस तरह से आप उसको वो करते हो उसके ऊपर है। वांट टू सी राहुल केपी इन फर्स्ट सेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आज थोड़े से अर्ली करने पड़ेंगे आई थिंक। वो हमने देखा है कि हमारे प्लेयरों की जो इंटेंसिटी लूज हो जाती है सेकंड हाफ में। आई थिंक अर्ली सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लू टाइगर्स। कर है मैदान, पता बिल्कुल बिल्कुल मैदान को फतेह करना है भाई। लेट्स गो लेट्स गो। लिंक अप बिटवीन अपूया महेश मिश्रा विल बी lit बिल्कुल। आई थिंक नोरेमस विल प्ले ऑन लेफ्ट साइड ऑब्वियसली। थापा फॉरवर्ड को पास नहीं करता, थापा बैक डिफेंडर का ही पास करता है। ओके एक सेकंड एक सेकंड, वन 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 मिनट, 1 सेकंड भाई। यस अच्छा भाई, सीरियन मैक्सिमम डायस्पोरा है, ब्राजील अर्जेंटीना से है, अच्छा तो करेगा ही। फिजिकलिटी इक्वल है ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैं मत लाना, डिफेंस करो ना वरना ह्यूमिलेट हो जाएंगे। अच्छा भावनाओं में मत भेजाना, डिफेंस करो वरना ह्यूमिलेट हो जाओगे। ये बात भी सही है भाई रोहित मुरे भाई, फुल ऑन अटैकिंग नहीं जाना है। आरआरबी पीओ एंड क्लार्क एग्जाम। अच्छा सीरिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखकर अफसोस हो रहा है, हम लोग बेटर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लाइक करो यार वीडियो को यार, लाइक में कंजूसी मत करो यार। 200 लाइक इज आवर स्मॉल टारगेट, एंड 9 के तक पहुंचा दो भाई। आई थिंक इतना तो कर ही सकते हैं। वी आर ओनली 70 सब्सक्राइबर अवे फ्रॉम द 9 के, सो भाई 9 के कर दो। चांगते गोल मारेगा पक्का सेकंड हाफ में, अरे भाई मजा आ जाए फिर तो भाई। जिक्सन का मिस कर रहे हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर अधूरा है। अरे संजय मेरे भाई कैसे हो मेरे भाई? 3-0 आज तो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे हम बिल्कुल भाई। 3-0 उज्बेकिस्तान, होप वी कैन मेक इट टू 0-0। शयन ओके बोल रहे कि इंडिया नीड्स टू गिव एवरीथिंग ऑन द पिच एंड ट्राई विनिंग द मैच। टुडे प्रेडिक्शन 1-1, ओके 2-1, ओके। अगर आज उज्बेकिस्तान ने पहला गोल मारा तो इंडिया चेस के लिए जाएगी और गैप खुलेगा उज्बेकिस्तान के लिए। दे आर ऑल्सो भाई, उसके कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था कि अगर इंडिया अटैकिंग प्ले से जाती है तो हमारे लिए फायदा है वो, तो उनके लिए तो अच्छी बात है भाई। इंडिया को ज्यादा से ज्यादा टैकल करना चाहिए ओपोनेंट को। डकवर्थ लुइस फॉर्मूला। अच्छा माय प्रेडिक्शन 1-0, अच्छा 1-1, ओके। सीरिया ने अपने फिजिकलिटी का शानदार इस्तेमाल किया, अब तो सीरिया से भी डर लगने लगा है। सीरिया मैक्सिमम डायस्पोरा है, ओके भाई। 4-4-1-1 फ्रॉम उज्बेकिस्तान। वी कुड हैव गॉन विथ द बैक 3 टू, बट या दैट्स टू रिस्की। आज कितनी गोल से हारेंगे हम? मे बी 1 और 2 गोल भाई। आज थ्रेश होगी इंडिया। अच्छा आफ्टर सीइंग सीरिया मैच आई गिव अप। मोस्ट ऑफ द पीपल हैज बीन गिव अप भाई आफ्टर दैट मैच। हर्ष दुबे बोल रहे हैं कि 4-3-3 में केएम सीडीएम या फिर 3 सेंटर मिडफील्ड के साथ भी जा सकते हैं। हाँ वो आई थिंक कोच के ऊपर डिपेंड है किस तरह से वो प्लान करता है। हेलो हेलो विशाल भाई कैसे हो भाई? ऑल रेडी फॉर द गेम? बिल्कुल बिल्कुल रेडी भाई। अगर आज हम जीत गए एनी हाउ और ऑस्ट्रेलिया ने उज्बेकिस्तान को ठोक दिया तो हमारा राउंड ऑफ 16 लगभग कंफर्म हो जाएगा। हाँ उज्बेकिस्तान ब्रेन बट माय हार्ट भारत। अरे भाई उमाशंकर जैना भाई बिल्कुल बिल्कुल ऑलवेज भाई। दिल तो भाई दिल दिल है हिंदुस्तानी, तो उसमें तो क्या ही बात है भाई।
आज सीरिया को देखकर हिम्मत खत्म हो गई मेरी। आई थिंक वो मैच बाद में रखना चाहिए था यार, इंडिया उज्बेकिस्तान के बाद में वो मैच रखना चाहिए था, ताकि जो भी फैंस का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था वो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो बना रहता। बट उस उसके बाद तो आई थिंक खत्म हो गया, आई थिंक जिस तरह से उन्होंने बोला, जिसमें उज्बेकिस्तान फैंस ने बोला है इंडिया बैक फ्रॉम, अच्छा मोए मोए। मोए मोए मोमेंट नहीं होने चाहिए भाई। जय श्री राम भाई। प्रिडिक्शन क्या है आपका? मेरा प्रिडिक्शन है भाई न्यूट्रल है 1-1 एंड सॉरी एज अ फैन 1-1 है मेरा, एंड न्यूट्रल पे है मेरा 2-0 लॉस, 2-0 या 1-0 लॉस। चांगते खेलेगा क्या? चांगते भाई सेकंड हाफ में दिख सकता है आपको कुछ मिनट, ही इज ऑन द बेंच। सेकंड हाफ में ईशान पंडित आएगा, हाँ इसको भी अब हटा देते हैं आई थिंक। लाइनअप लाइनअप हमने देख लिया, लाइनअप में चेंज भी ज्यादा नहीं है। सो 2-0 उज्बेकिस्तान, न्यूट्रल 0-0 एज अ फैन। अच्छा ओके। शंकर महाकुड ऑफिशियल बोल रहे हैं कि इंडिया हारे या जीते, आई ऑलवेज लाइक फुटबॉल एंड वॉच बिकॉज फुटबॉल इज नंबर 1 गेम इन इंडिया। के लोग क्रिकेट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली यंग जनरेशन। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है शंकर भाई, तो देर इज ए होप भाई। Who is saying Syria is diaspora player? 95% players are born in Syria. Stop saying भाई वो वहां पे बोर्न हुए हैं, लेकिन पलायन भी तो हुआ है उसका। सीरिया इज अ वॉर अफेक्टेड कंट्री भाई, तो रेफ्यूजी के तौर पे काफी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं वो भाई। तो जन्म भले ही उसका वहां पे सीरिया में हुआ हो, लेकिन एज ए रेफ्यूजी वो डिफरेंट कंट्रीज में सेटल डाउन हुए हो, और फिर वो वहां से क्या बोलते कि वहां पे फुटबॉल खेला है उन्होंने, और फिर वो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट्स बेसिकली ओरिजिनल प्लेयर बोल सकते हैं आप, सिर्फ जन्म यहाँ पे हुआ है, बाकी सारी फुटबॉल उन्होंने बाहर ही सीखी है, खेली है। सो दैट्स द थिंग भाई। Because new ways to draw won't help us qualify round of 16, so let's go all out. चित्रन राज बोल रहे कि ये तजाकिस्तान कब से इतनी खतरनाक होगी भाई? सेंट्रल एशियन टीम्स आर ऑलवेज यू कैन से कि चैलेंज, एंड दिस तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ऑल ऑफ दिस आर भाई बेसिकली दे आर द रशियन, ऑब्वियसली वी नो इन हिस्ट्री दे पार्टेड वेज इन द 1919 ग्रेट यूएसएसआर से जिस तरह से डिफरेंट हुए। सो दे आर प्लेयर्स की जो वहां पे भाई उस क्वालिटी के है अभी भी। हमारा ग्रुप सबसे कॉम्पिटिटिव है, मजा आएगा। इंडिया ड्रॉ दिस मैच। अच्छा फ्री स्टाइल पे बोल रहे कि ईशान पंडिता, लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कि ईशान पंडिता को सेकंड हाफ में आना चाहिए क्या नंबर 9 के तौर पे? व्हाट डू यू से? बिकॉज द ओनली नंबर 9 ऑप्शन इज हिम, एंड आई थिंक सुनील छेत्री सर मतलब पूरा 90 मिनट में नहीं देखता हूँ कि वो उतना ज्यादा इंपैक्ट डाल पाते हैं। आई थिंक वी कैन यूज हिम फॉर 50-60 मिनट एंड देन ईशान पंडिता जैसे स्ट्राइकर को हम ला सकते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? आज हम जीत गए तो पक्का पढ़ाई चालू कर दूंगा। वैसे भी कर दो भाई। अगर हार गए तो मोटिवेशन के तौर पे कर दो कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा है, चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर जीत गए तो उसकी खुशी में कर दो। तो दोनों तरफ से भाई अपने आप को वो करो थोड़ा सा। पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज न्यूट्रल इंडिया 1 उज्बेकिस्तान, अच्छा 1-1 उज्बेकिस्तान ओके। एज फैन इंडिया 1 उज्बेकिस्तान 0। अच्छा आज बस सुनील छेत्री गोल मारे बस और कुछ नहीं। हाँ मैं भी भाई उसके गोल के लिए तो तरस रहा हूँ। इंडिया का एटलीस्ट 20 टैकल करना पड़ेगा जीतने के लिए, अदरवाइज ब्लू जर्सी ही है यार। अच्छा पंडित अल्डो गोल मारेगा, पंडित अल्डो। पंडित अल्डो कुछ खेल ले भाई, वही बढ़िया है। आज हमारा मजा लेने आएंगे उज्बेकिस्तान फैंस, ऑब्वियसली भाई आएंगे। झूठी उम्मीद दिलाकर छोड़ दिया। अरे यार, इवन ईशान पंडिता एंड जय गुप्ता आर ओरिजिन प्लेयर्स देन। भाई आपके थॉट्स के लिए तो 21 तोपों की सलामी। वो पिक्चर देखा है 21 तोपों की सलामी? जन्म भले ही सीरिया में हुआ हो, पक्का गुजराती हो लाइक रूपानी साहब। अच्छा एग्जैक्टली भाई। बर्मा उसका उसका जन्म भाई बर्मा में हुआ था। ईशान पंडिता फॉर सुनील छेत्री 100%। यस ही शुड कम। आज महेश को स्टार्ट करना चाहिए, कर रहा है भाई, बैटमैन कर रहा है महेश स्टार्टिंग। पंडिता इज बेटर देन छेत्री राइट नाउ। अच्छा अगर आज हम गोल्स खाएंगे तो बहुत एम्बेरेसिंग होगा, क्योंकि बाकी टीम्स थाईलैंड भी बहुत अच्छा खेल रही है। मैच भाई, मैच अभी 8 बजे स्टार्ट होगा, अभी आधा घंटा है भाई। Ishan Pandita should come after 60 minutes immediately and should not wait more than that. Substitution I think in game management I think Igor Stemic का आज तो बेटर होना चाहिए आज, एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्टेशन अब रखना चाहिए, अदरवाइज वी आर ऑल मतलब क्या बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू कंसीड मोर। इंडियन पीपल क्रिकेट में भी नहीं पढ़ाई करते, नहीं पढ़ाई करके बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा
हार भी गए तो भी क्वालिफाई मैचेस खेलने को मिले हैं एंड एक्सपोजर मिलेगा, दैट्स द इम्पोर्टेंट, बट क्वालिफाइंग फॉर राउंड 3 वर्ल्ड कप इज मस्ट फॉर दोस क्वालिटी 10 मैचेस अगेंस्ट टॉप टीम्स। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया खेले थ्रू बॉल, उज्बेकिस्तान खेले लो डे का बॉल। अफ्रीका कप का सॉन्ग सुना, मस्त है। अच्छा नहीं सुना मैंने, सुनना पड़ेगा भाई। ओके भाई। इंडिया अंडर 17 अंडर 19 टीम की 10x बेटर देन दिस टीम। हर्ष दुबे भाई, लेकिन वो टीम भी अभी क्या बोलते हैं कि हो है नहीं आपकी कोई। भाई आज की विन होने पे कुछ डेयर दूंगा आपको, एक्सेप्ट करोगे? वेदांत पाकरे भाई बिल्कुल भाई कर लेंगे, चलो आई थिंक करेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओ ओए ओ ओए ओए अच्छा। अच्छा, जोक ऑफ द डिकेड, पंडिता इज बेटर। एग्जैक्टली भाई, वी नीड छेत्री इन नेक्स्ट गेम। नंदन दत्ता जी बोल रहे हैं कि भाई इफ इंडिया क्वालिफाइज फॉर सेकंड राउंड योर सब्सक्राइबर वुड बी 15K विद इन दिस एशिया कप, मार्क माय वर्ड, न्यू पीपल विल टेक इंटरेस्ट। वो तो है भाई, वो तो है, वो तो है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ईशान पंडिता हिलते डुलते हैं, ये 90 मिनट से निकाल देगा। अच्छा, चलो भाई। ब्रदर आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की, मैंने बोला था टाइम स्टैम्प लगाओ, आपने लगाई। अच्छा भाई, वो टाइम स्टैम्प का भाई इश्यू क्या आता था, मैं थोड़ा सा फिर क्या है कि मैं 9 बजे मेरा ऑफिस भी वो स्टार्ट हो जाता है, सो जल्दी-जल्दी में कभी-कभी नहीं लग पाता, अदरवाइज़ जब टाइम रहता है तो मैं लगा देता हूँ भाई। इसके चलते मैंने भाई 1 घंटा अपनी नींद कम की है। सो अब पहले मैं 7 बजे उठता था, अब 6 बजे कर दिया है, ताकि क्या बोलते हैं कि 7 बजे मैं रेडी होके वीडियो बनाना चालू करता हूँ। सो 2 घंटे लगते हैं सारा चीज़ में, तो 9 बजे तक हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता था पहले कि 1 घंटा में ही करना पड़ता था, तो इसके चलते नहीं हो पाता था भाई। अरे भाई वो उज़्बेकिस्तान टीम को जमाल गोटा खिला दिया करो। जमाल। बिल्कुल भाई। उसको वैसे ही भाई क्या बोलते हैं कि वैसे ही 5 सब्स्टिट्यूशन फिर करने पड़ेंगे टॉयलेट जाने में ही। कहीं फील्ड में इंडियन प्लेयर्स आज यहाँ वहाँ भागते नजर आएंगे। छेत्री इज डन प्लेयर मैन ना, देयर आर नो डाउट्स ऑन दैट, ईशान पंडिता ओवर छेत्री एनी डे नाउ। अच्छा, पंडित आल्डो डजंट गिव एफर्ट, छेत्री दैट्स द प्रॉब्लम। बिकॉज ही इज बीन इंजर्ड ना भाई, खेला ही कितना है वो सुनील भाई, गोल ठोको, ईशान परिदा लेगा छोको। कुछ ट्रांसफर न्यूज है क्या? आकाश गोगोई में ट्रांसफर की बात करेंगे, ट्रांसफर न्यूज आप सुबह वाला वीडियो चेकआउट करते रहिए, अगर जैसे ही होता है ट्रांसफर अपडेट वहां पे मिल जाएगी, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप। इंडिया 11 ड्यूलर में इंडिया की 11 है, सिंपल सी भाई, लास्ट मैच में थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसमें 3 चेंज हुए हैं। चांगते की जगह पे नोरेम मैस आ चुका है, दीपक टांगरे की जगह पे थापा आ चुका है, एंड सुभाषिस बोस की जगह पे आकाश मिश्रा, बाकी आपकी लाइनअप सेम है। कियान विल बी नेक्स्ट सुनील। देखिए कोई भी बन सकता है, अभी आप बोल नहीं सकते, जो परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंट वो बन पाएगा भाई। सनी में बहुत फनी लग रहा है। अच्छा, हर्ष भाई बोल रहे कि भाई हमारी जूनियर टीम ने अर्जेंटीना तक को हरा दिया जब लियोनल स्केलोनी उनकी जूनियर टीम का मैनेजर था, रिमेंबर? यस यस यस, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। वी नीड गुड एस्ट्रोलॉजर फॉर। अरे यार, ब्रदर ब्रेंडन is the best playmaker in ISL for so many years, but teammates never starts him. We can't win against strong team without Brendan. He's a creator भाई, definitely one of the our best creator at the moment. आज मनवीर हगेगा, अरे भाई ऐसा मत बोलो यार। उज्बेकिस्तान और प्रेशर, हाँ दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर भाई। आई थिंक अगर फर्स्ट हाफ में स्कोर लाइन 1-0 या फिर हम 0-0 रख पाते हैं, 1-0 इन फेवर ऑफ अस, सो आई थिंक दे आर इन अ ह्यूज प्रेशर भाई, देन वो पैनिक मोड में आएंगे डेफिनेटली भाई। भाई मेरे पूरे दिन का शेड्यूल भाई सिंपल सा रहता है। 6 बजे मैं उठ जाता हूँ और 7 बजे तक रेडी हो जाता हूँ, आ जाता हूँ इधर, 2 घंटे में वीडियो बना देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, 9 सवा 9 बजे फिर जो अपना धंधा है चालू हो जाता है, एंड 1 बजे तक है, फिर 1 बजे लंच, 1 से 2, फिर उसमें ही वो क्या बोलते हैं कि रील्स बना दिया, फिर 2 बजे से फिर से स्टार्ट हो जाता है अपना काम, एंड देन 6 बजे तक, 5-6 बजे 6 बजे तक, उसमें बीच में जब टाइम मिलता है तो थंबनेल बम्बनेल बना के शेड्यूल वेड्यूल करता रहता हूँ। तो इस तरह से रहता है भाई। 6 बजे फिर आपके साथ लाइव होता है, 6 to 7, 7:15, फिर 7:30 बजे घर जाता हूँ, 8 बजे डिनर होता है, फिर थोड़ा सा 1 घंटा रिलैक्सेशन, और उसमें बीच में कोई मैच चल रहा है तो उसको देख रहे होते हैं, देन फिर 9:30 बजे फिर से लाइव, तो 9:30 से 10:30 बजे तक, फिर 10:30 बजे भाई आधा घंटा 1 घंटा
ऐसे ही मोबाइल में क्या बोलते कुछ देख लिया एंड देन फिर 11:30-12 बजे सो जाने का भाई। सो दिस इज माय रूटीन भाई। टफ रूटीन भाई पिछले मतलब मुश्किल है ये। विनीत भाई ओपी है अच्छा। गुड इवनिंग ब्रदर, टुडे वी मेक हिस्ट्री। गुड लाइनअप बट सुभाष में स्टार्ट इंस्टेड ऑफ आकर, नहीं नहीं भाई पब्लिश लाख रहा भाई स्टार्ट। आई थिंक बॉस भी थोड़ा सा उसको भी निगल बिगल था, वो फुल्ली रिकवर नहीं है, सो दैट्स व्हाई उसको रिस्क नहीं लिया गया। आकाश को भाई ओके ओके अच्छा। Those who Pandita doesn't presses teams play without pressing. If there is a Liverpool, there is a Girona. You don't need to be pressing when you don't play. That's right. Pandita is the target. Hmm. सुमलिया चटर्जी बोल रहे हैं कि we need to work more for midfield to create passes through balls and possession. Every team first priority is good mid. We only have a quality Apuya and no other skill that mark. उज्बेकिस्तान पर जादू टोना करना पड़ेगा। हाँ, उज्बेकिस्तान टीम के अंदर लॉक कर दो अभी। हाँ, इफ यू गिवन प्रॉपर चांस आयुष चुकरा वुड बी पॉसिबल स्ट्राइकर। हाँ भाई देखते हैं अपने आप को किस तरह से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हैं भाई। सहल नहीं खेलेगा क्या आज? बिल्कुल बिल्कुल सहल इज आउट ऑफ द मैच एंड नेक्स्ट मैच में भी भाई डाउटफुल ही है बट लेट होप सो। मनवीर हैज टू यूज हिज फिजिकल प्रेजेंस इन द टुडेस गेम। सो आपका डेयर है कि आप कैसे एक प्लेयर को जो आपको लगे कुछ करेगा फ्यूचर में फुटबॉल में, उसको फुटबॉल स्टार्ट देना आपके आपके लोकल में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, श्योर श्योर। मेरी तो फुल फटी पड़ी है, हारने वाली फीलिंग आ रही है। तो भाई वो तो वैसे भी देखिए, वैसे भी वो तो पता ही है, बट आई थिंक अगर अच्छा कुछ कर जाते हैं तो दैट्स भाई क्या बोलते कि एक्स्ट्रा एडेड बोनस वही वाली चीज है। टांगरी भाई फुल्ली रिकवर नहीं कर पाए, सो दैट्स द केस भाई। इतना हाई इंटेंसिटी जब गेम खेलते हो आप पहला ही मैच, सो समटाइम्स आपकी बॉडी उस तरह से क्या बोलती है कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। अगर किसी प्लेयर को बीच मैच में बाथरूम लग जाए तो कैसे जाते हैं? सब्स्टिट्यूट के अलावा कोई दूसरा तरीका है क्या? हाँ वो जा सकते हैं भाई, फील्ड छोड़ के आप जा सकते हो, इसमें ऐसा नहीं होता। 10 मैन के साथ वो खेलता ही है, वैसे भी आपका कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो साइड लाइन में बैठा रहता है, तो आप 10 मैन के साथ कंटिन्यू करते हो, सो वो जा सकता है भाई बीच में। बट मैं वैसे भी 45 का मिनट का ब्रेक होता है, तो उसी में जिनको जाना होता है वो चला जाता है, सो वो इश्यू तो नहीं आता भाई। फुटबॉल भाई नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं भाई फुटबॉल का किसी चीज का भाई। वो सारा स्कूल डेज में हो गया भाई। व्हाई सच अ डिफेंसिव टीम अगेंस्ट उज्बेकिस्तान वी कैन विथ आवर अग्रेसिव गेम प्ले अगेंस्ट देम दे आर नॉट दी। भाई इससे ऑफेंसिव तो क्या ही जाओगे आप? एक ब्रांडेड एक आप ऐड कर सकते थे थापा की जगह पे अगर फुल ऑन ऑफेंसिव जाना था। अदर देन दैट आई डोंट सी आप उससे ज्यादा इससे ज्यादा डिफेंसिव जा सकते थे भाई, सॉरी ऑफेंसिव। यही आपका सबसे ज्यादा ऑफेंसिव स्कोर है, एक ब्रांडन अगर आ जाता है या फिर सहल नहीं है, अदरवाइज सहल। बाकी तो आप विंगर, बाकी तो सारे आपके विंगर के ऑप्शन है, और क्या आप ऐड कर सकते थे भाई? दोनों फुल बैक आपने ऑफेंसिव खिला लिए हैं। इंडिया को एशिया में टॉप 8 में आने के लिए 10 साल लगेंगे, अगर ऑनेस्टली के साथ मेहनत करे तो नहीं तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो वो तो पता ही है भाई, प्रथा प्रतिम गांगुली भाई, दैट्स द रियलिटी एंड ऐसे ही चलता आ रहा है भाई, सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, इसलिए हम वहां पे नहीं पहुंच पाए, अदरवाइज कब के पहुंच गए होते भाई। सो हमारे यहाँ पे जो मतलब जो लोगों को स्टेक होल्डर से जिनको काम करना है एक्चुअल में, वो कोई कर नहीं रहा है, सो दैट्स इवेंचुअली भाई गोइंग टू हैपन। टांगरी को लास्ट मैच में नॉक हो गया है। गजब लाइफस्टाइल है भाई, फुल प्लानिंग। फुल प्लानिंग क्या भाई, अभी घिसवानी पड़ती है ना विसल भाई, इसमें क्या करते हैं? भाई एक बात जनरली बोलूंगा, इंडिया का एफसी अंडर 17 एशियन कप खेलने वाला प्लेयर को प्रॉपर्ली नर्चर करना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में भी हम ऐसे ही बैठकर प्लेयर करते रहेंगे। हाँ, मिसिंग प्रणय हल्दर द वॉल विथ नो ब्रिक्स। ब्रिलियंट brilliant trick to us. Wall without bricks. इनविजिबल वॉल। इनविजिबल वॉल भाई, किसी को दिखेगा नहीं भाई, लेकिन वॉल है वहां पे। अरे भाई। पंडिल टल्डो टारगेट मैन लॉल with one player in front of goal post. Wanted to see अपुया ब्रेंडन छेत्री लिंक अप, why ब्रेंडन doesn't start? मैं भी देखना चाहता था भाई। Apuya Suresh फिर didn't work last game and that's Australia put so much pressure on us and India couldn't create chances. They have to step up for today if India wants to do anything. Agree भाई। Apple is green, India will win. अच्छा भाई, हाँ। चलो भाई, भाई चांगते टांगरी इंजर्ड है क्या? इंजर्ड इन सेंस कि फुल्ली अभी अभी मतलब थोड़ा सा वो क्या बोलते कि फटीग है, सो सेकंड हाफ में मे भी कुछ मिनट खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेल सकते भाई। मैं 8 आवर मोबाइल में ऑनलाइन क्लास करता हूँ, आई प्रॉब्लम होगा क्या?
हाँ नबो विश्वत भाई होगा तो भाई वो ऑपरेशन करवा लेना, उसमें क्या है। माय हार्ट बीट इज एट 200। अरे भाई काम डाउन भाई। ब्रदर इफ यू नीड हेल्प टू मेक थंबनेल एंड टाइम स्टैम्प आई कैन हेल्प यू। अरे वेदांत बाकरे भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो भाई, थंबनेल के लिए भाई मेरे को चाहिए हेल्प। थंबनेल में मेरा टाइम साला बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। एंड टाइम स्टैम्प आप टाइम स्टैम्प भी आप लगा सकते हो, आप वीडियो देख के आप मैसेज कर दो, मैं उस मैसेज को पिन कर दूंगा। सो वो भी आप हेल्प कर सकते हो हमारे साथ। अरुणा सर भी जुड़ चुके हैं। सो आई थिंक हमने तो काफी सारी बात कर ली है। भाई सीरियस सो मच बेटर। वेलकम वेलकम सर, गुड इवनिंग एंड how are you and what's going on in the mind? Excitement, nervousness, क्या feeling है? Good afternoon, Hiren, and good afternoon, everyone who's watching. It's a nice day. It's sunshine. It snowed. बाहर गए थे, so it was nice. I'm nervous to some extent because I saw Syria play against Australia, and you saw in that second half, despite Australia again taking charge of the game, that Syria at least tried to get an equalizer. And that was the striking difference to our game. And um, I'm hoping and wishing we can pull off something, but I don't know. It's the team will have to pull it off, and as expected, Igor made a few changes. So therefore, yeah, I think it's a very important game. If you want to do something in this tournament, we need a point today because Syria is not as easy as I think a lot of people have thought and think. What's your thought about the starting 11 then? Are you happy with the changes? Are you what is the approach of India in the first half? I mean, certain changes were forced. Changte has picked up in niggles, so that was an issue. Deepak Tangri looked exhausted, so I think those two question is if Thapa was coming in or if Brandon was coming in. Mahesh was very clear to me, and the change, which is a more of an attacking change of getting Akash in for Shubhashish. Shubhashish supposedly has also had some issues over the last 2-3 days. And yeah, that will be interesting to see. I think very important will be we've got two attacking side backs today. How much do they have to fall back? So therefore, from that aspect, I think it's going to be very interesting for us. It's a different game. Uzbekistan will play more with the ball, will not sort of, spray the ball as much as the Australians were. And it's going to be interesting to see how fit are our boys after those 90 plus minutes against Australia. I think that's another thing that we're not used to this tempo, used to these sort of pressure situations. And the main thing is not to concede, and ideally on a counter to maybe score, to put a little pressure on Uzbekistan. And then football is a funny game. You can do something, but this Asian Cup has shown none of the minnows have actually been able to really create an upset. I mean, the biggest upset so far is Syria drawing Uzbekistan. Unlike African Cup of Nations, which has been full of upsets. I don't know what's happening over there, but it's crazy. I think for India, the danger is that some teams behind India will suddenly be potentially catching up with India in the rankings. So that's another thing that we need to look out for. If I look, for example, Namibia. So therefore, yeah, let's see. I mean, it's going to be interesting, and I think it's going to be a challenging game for us. And but the hope is always there. The hope is the last thing that I don't want to miss. हमारे साथ राहुल भी जुड़ चुके हैं. So welcome Rahul again for the watch along. And how are you? And first, what's your feeling about this match? Nervous, excited, and what's your thought about the starting 11? Weirdly not that nervous. I don't know how, I don't know why, but not feeling that nervous. Just feeling like it's a normal football game for once. I don't know how, but yeah, it's just happened. Lineups are interesting actually. What do you guys think about Changte's being benched? Do you think it's injury? Is he picked up a niggle or? I think yes, I think due to the niggle maybe. And I want to know about this Thapa or Brandon.
I What's don't your thought mind. I about don't that? mind that. Because I think I don't if you mind want that. to create, or you can say कि playmaker, then Brandon is a perfect choice. But I think थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा एक आपको डिफेंसिवली भी थोड़ा सा हेल्प कर दे. Yeah. What do you say, sir? I would have actually gone with Thapa itself and not Brandon, because I think at the end of the day, these sides are probably, I mean, we're going to have to run a lot because they're technically better. So we're going to have to do the work, sort of the physical work a little more. And I think Brandon doesn't have the legs yet because he's not playing consistently in the ISL itself. So I don't think he can sort of, I don't think he makes an Asian Cups game at least right now. It would be nice to have Brandon for about 30, 40 minutes in the second half, and that'll be nice. But Thapa, I think, is the right choice. What do you say, sir, about that? Agree and a little bit of a disagree with Rahul, in the sense of, because the interesting part will be that Thapa is most probably coming in as that 8, as that 10, with Suresh becoming, so to say, the new holding 6. The question is, will Thapa be a 10 or an 8, or are you actually intending him of using him potentially as the third number 6? So therefore, that's the question, because Brandon is the more creative player, and the question is, do we need a little bit of more creativity in the first half an hour, I would say, rather than the last half an hour, because the last half an hour is more about the legs. So in that is the question, and that's what you also saw with the Australians against Syria, is that Syria took the game to the Aussies in the first half. So the question is, and the Aussies sort of smartly played their through in the second half. And this is something is, the Aussies aren't as good as Australia have been in the past. That is visible, but they smartly played through, and that's the question of how India approaches Uzbekistan, because Uzbekistan has the potential to do that 90 minutes to you. Are you able to avoid the mistakes that you did in that game, which will automatically come if you're defending for most of the half? And that's going to be the interesting part. Again, Syria tried to play against Australia in that second 45. And that's the point for us, which is, I think, very sir, important. but sir, that's why I also tempted to start with the Brandon कि अगर आपको उसका यूटिलाइजेशन और आपका अगर चांस भी है तो फर्स्ट 45 मिनट में ही है कि अगर वहां पे आपको एक ऐसा क्रिएटिव प्लेयर आप डालते हो तो आपका जो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड हाफ. So that's the thing. If Thapa is gonna switch to 10, that's the way he should stay as 8. Let's see भाई किस तरह से वो करते हैं. एंड आई थिंक सही बोला कि सीरिया ने भी जो चांसेस है, अच्छे चांसेस उनके फर्स्ट हाफ में ज्यादा बने थे. वो एक पोस्ट पे जो हिट किया था, दैट वाज अ ब्रिलियंट चांस टू, स्टार्टिंग में ही वो बन गया था सीरिया के लिए. एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ फैन आफ्टर सीइंग सीरिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम, आई थिंक जो होप बची थी कि भाई सीरिया के सामने भी हम 3 पॉइंट ले सकते हैं उसको भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि एक बड़ा झटका लग चुका है कि नाउ इट्स that game is also going to be really tough for India, and quality is visible in Syria's game. If you look at today's game, the earlier game between Syria and Australia, Syria had chances to win this game, right? That's the difference. We had a chance to go ahead, but do we think that even if Sunil had scored the header, like in the other games we've seen in this Asian Cup, and you see Syria, Hector Cooper as a coach, a lot of South American influence in that team. That is not an Asian team. They were playing like typical South American team. Yeah. So you could see that with that coach, with the combination that they're having. Uzbekistan is a team which plays football. They're of the Russian mold. The Russian teams like to play football. They are technically good. And I feel we struggle more with teams which are technically good rather than teams which are physically strong. Because that physicality part we showed against Australia. Yes, for 45 minutes, we can keep them on the bay. And again, this Australian team, Jackson Irvine is today saved them again with a goal as captain, or as de facto captain today. Therefore, it's going to be very, very interesting for India. How do you go into that? Do we have that mindset also to try and win this game? I know the coach is talking about it in the media. People are talking about it in the media, but what are the conversations internally? Because we're not there, right? Are these conversations happening like that? So therefore, let's wait and see. So Mevlon Beck, इसका क्या नाम है, उज़्बेकिस्तान फैन है, he is predicting Uzbekistan 3-0.
Okay, bhai, let's see, bro. There are a couple of Uzbek fans. I don't think Thapa will deliver that perfect balls as Brendan if he gets free kick in their half. Definitely by crosses or set pieces. I think Brendan is more, you can say, ki experienced one also. India has more chances to score the first goal than Uzbek, cause because Uzbek will try to come all out, and if we catch them on transition, we can do real counters. But वही करना तो मुश्किल है. Whole match ब्रैंडन विल सब, सुरेश उदांता विल सब, मनवीर. सब्स्टिट्यूशन भी सर, आई थिंक 3 प्लेयर को यहाँ पे बाहर रखा गया है. सहल तो इंजरी के चलते हैं. लिस्टन कोलास और विक्रम प्रताप सिंह, इन तीनों यहाँ पे बेंच पे भी नहीं है. So If nice, the Uzbek win, opening ceremony over there now with both the national flags being turned around. I don't know if you already in India they're showing it, but on that global stream from AFC Live, it's showing both the teams are lining up in the tunnel, ready for the game. अच्छा मैं yeah. भी लगा देता वो भी. And yeah, we've got 8 minutes to go. Sunil having a word with the boys. दिखा रहा है तभी. So it's a try of BFC players in the front: Sunil, Gurpreet, and Suresh. Rahul will be happy. Lovely fans, a lot of Indian fans. Go watch game. अच्छा. If Uzbekistan will win, I will propose to my crush. भाई सीरिया को कैसे हराने का प्लान का क्या अब भाई देख वेदांत भाई, पहले ये मैच हम टैकल कर ले, 1 मैच एट अ टाइम. इधर पहले कुछ कर ले. रेफरी भी आज इंटरेस्टिंग रेफरी है, मजा आएगा. आई थिंक मैंने एक सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक देखा था, उज्बेक फैंस आर आल्सो नॉट हैप्पी विद दिस रेफरी, बिकॉज ये रेफरी जब लास्ट टाइम था तब हेक्टर कूपर को इसने से वो लास्ट मैच था हेक्टर कूपर का एज उज्बेकिस्तान हेड कोच, लास्ट मैच में 2-0 से हारे थे किसी के साथ. सो दे आर आल्सो, यू कैन से कि ये थोड़ा सा लफड़े वाला रेफरी है. फ्यूमिंग. राहुल टीवी पे देख रहे हो क्या तुम? No, and I'm watching on Jio Cinema. Hopefully my internet holds up. Yeah. So the referee takes the ball, and now both the teams are walking onto the field. आप दो सेकंड आगे हो मेरे से सर. Very good. Oh, goal. No, sorry. So I have this very, not ritual, but it's more superstition. So before I start watching any football game, I never watch players coming out. So I don't watch, say like 2 minutes or 1 minute before kickoff. That's when I start turn on this thing and watch. अच्छा, वो जब लाइन में खड़े रह जाते हैं तब तुम देखना स्टार्ट करते हो? नहीं उसके बाद ही, before just when the toss हैंडशेक भी हो जाए उसके बाद. Yeah, exactly. You guys have any sort of superstitions before a game? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर सुपरस्टिशन ऐसा कुछ है नहीं मेरा तो. मैं तो I would, whenever involved with teams or teams where I know people, I used to do it at Mumbai City or Round Glass as well, or do it every match day at FC Remshad. I always do a handshake with the coach before the game and wish him all the best. So that's something which I do ideally before they go into the dressing room. I don't know, were there days when you didn't sort of I mean, of course you didn't shake the coach's hand and you ended up losing games or something like that? Yeah, the opener of the ISL. Yeah. सागर भाई बोल रहे कि कैन बोथ दिस टीम टैकल रेफरी इन मैच एंड सेंड हिम टू चाइना डायरेक्टली. सुपरस्टिशन आर जस्ट फॉर दोज हु आर नॉट कॉन्फिडेंट विद देयर एबिलिटीज. अच्छा, ठीक है भाई. That's his opinion. We need again, superstition is something that a lot of people have. Superstition कुछ ऐसे superstition होते कि इससे become a habit. तो वो exactly. It's more a habit. Even when I play football, I always ensure I wear my left sock before my right sock. Yeah, exactly. So those are the things. Check your boots and all that stuff. And also like to wear a certain pair of socks to certain games, home or away, and all those kind of things. So yeah. Fans सर आज काफी सारा है. उज्बेकिस्तान फैंस भी देखो, टिफो फ्लैग उनका. I think today 40,000 तो होंगे मेरे हिसाब से आज.
लास्ट मैच भी 37 थे ना. चलो Uzbeks are also ready. 40 नहीं होगा because again top tier at the moment, but stadiums fill up towards towards 30 minutes 40 minutes at the moment. It's it's काफी सारे उज़्बेक फैंस भी काफी सारे हैं. हाँ. स्टेडियम में 85% ऑक्यूपेंसी है. मैं वही बोल रहा हूँ, आज क्राउड ज्यादा होने वाला है मेरे को लगता है. ललित सोलंकी बोल रहे 3-1 इन फेवर ऑफ इंडिया. क्या बोलती कंपनी? लेट सी भाई, लेट होप सो ऐसा रिजल्ट आ जाए तो उससे तो बढ़िया क्या ही बात है भाई. We would be happy with such a result. We'll take it, but do we believe it? That's a different thing. बेरिसन घोष भाई, ये देखना पड़ेगा नवबोहर के कितने प्लेयर है भाई. नवबोहर के एक मिनट चेक करता हूँ. The keeper is Navbohar. That I know for sure. चेक. I think 2. एक सेकंड चेक कर लेते हैं. One second. नवबोहर के एक तो कीपर है, यस. दूसरा है उसका मिडफील्डर ओस्टोन उरुनव. ठीक है, उरुनव. हाँ. एंड दो ही है. पक्ताकोर से एक है, एक तुर्किश लीग में खेल रहा है, एक जर्मन लीग में खेल रहा है. Abdulkadir Kusana, one of the centre backs, the right side centre back, is the one I was telling you guys about. He plays for Long, and he came on against Arsenal. Yeah, 19-year-old. खुशनो ना, हाँ, यस, आरसी लेंस फ्रांस के लिए. एक मॉस्को के लिए है, एक पेथम यूनाइटेड थाईलैंड में भी है. अच्छा, इगोर सिग्रिव एंड एफसी नसब के 2 है. सो मिक्स यहाँ पे क्या बोलते हैं उनकी ओर से भी लाइनअप है. Chinese referee. I think 4-3-3. I think okay, Masha Ripov, I think, will be the main man, the man who plays in Greece, the captain. I think he's the guy to watch out for. He's the guy for the creativity. So therefore, yeah, those interesting. But of course, they missed their best player, so that's a good thing. Does that neutralize it? Because I feel मुश्किल है पर मजा आएगा. बिल्कुल. Yeah. Come on, India. बिल्कुल. Come on, India. Let's go. गुरप्रीत पाजी दिखा दो कमाल भाई आज गोलकीपिंग में. Let's go, boys. Hopefully we can hold them 0-0. बिल्कुल भाई. Brother, I really hope there are no mistakes. I really want to मैच के बाद चेक करता हूँ. फाइनल प्रेडिक्शन इंडिया ड्रॉस दिस मैच. अच्छा भाई, द वे मैं आपका भी सर, आपका प्रेडिक्शन क्या था? 3-0 लॉस एज ए न्यूट्रल एंड ड्रॉ एज ए फैन, राइट? राहुल, तुम्हारा क्या प्रेडिक्शन था? 1-1 ड्रॉ. अच्छा, एज ए फैन भी वही और एज ए न्यूट्रल भी वही? सेम, एवरीथिंग इज सेम. इट्स 1-1 ड्रॉ. Okay, let's go for it. If Gurpreet so Kamal, that means we are dead already. लेकिन गुरप्रीत के भाई लॉन्ग बॉल भी काफी यूजफुल होते हैं भाई. सो जस्ट नॉट कि डिफेंड में शॉट स्टॉप करने के लिए ही है. उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें टू क्या बोलते कि ब्रेक द लाइंस और हमारे आप से बॉल को ले जाने के लिए. फ्यूमिंग भाई का एरर मत कर देना भाई, पेनल्टी फालतू का मत दे देना. चलो, मैच has been started, guys. It's India versus Uzbekistan, and straight away. So maybe it's luck that Mark, who is of course one of our ISL commentators, is on commentary today. So let's see. But मैं नए कोई किसी को देखना चाहता था यार, थोड़ा सा मतलब ठीक है वो है, but already I get it to start. First chance missed. सीधा ही चांस मिस्ड. अरे उज़्बेक फैन काफी सारे हैं सर. आई थिंक इतना मैंने एक्सपेक्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया के इतने नहीं थे, मतलब उज़्बेकिस्तान के काफी ज्यादा फैंस दिख रहे हैं.
चलो 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 कम ऑन सुनील पाजी यार. So Thapa is playing number 10, right? Yes. Thapa is playing number 10. हाँ. अरे यार मनवीर. Uzbek winning a second balls already. First chance missed. चलो 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 चलो. मिश्रा. राहुल इतना सीरियस क्यों हो गया भाई? चिल चिल, अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है भाई. अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है यार. फाउल यार. नहीं वो क्या करे तो तुम्हारा क्या टाइम स्टैम्प क्या चल रहा है? Not a bad first 2 minutes, honestly, because we haven't let the Uzbeks get on the ball and sort of play their football. So it's been decent so far. तुम्हारा टाइम स्टैम्प क्या चल रहा है? 2:12. अरे यार तुम्हारा सर? 2:18, 2:20 now, 2:21, 2:22. दो सेकंड ही आगे हो आप, 2-3 सेकंड. कोई वो तो चलेगा. चलो. Went out of play. गुड प्रेसिंग. अच्छा प्रेशर बनाया. दिस इज गुड. हेलो भाई, आउट. थ्रो इन. ये जो कौन सा उसको वो आई थिंक अटैकिंग प्लेयर को लाया है, फैजुतुल्ला ऐसा कुछ नाम है उसका. क्या नाम है? हाँ, फ्यूजलेव. एबो स्पेक फ्यूजलेव. मॉस्को के लिए खेलता है, सीएसके मॉस्को. Apuya and Suresh as a holding midfielder. I think that Very was good. nice. What India just Arey, tried, yeah. the winger coming in and the fullback going outside, that was nice. Going out. If Rahul Beke can find the pass there, we're away. That was a क्या बोलते हैं, Subhash's balls can't do that thing ना. Akash Mishra can give you that. Very good, very important interception from Sandesh. Uzbekistan and very good Manveer. रोको यार. Come on यार, defend करो निखिल. Oh, goal. Bravo. That was such a bad goal to concede. That was such a bad goal to concede. Too easy. Too easy. But Vinit, it's too easy to blame Nikhil for this. Everyone, the midfield, no? Look, they are unable to block. Then they play out. Block, हाँ. What is Nikhil supposed to do? Nikhil's header one, header. Sandesh Can't do anything. He can't. Gurpreet is good. All of them are, And it's a bit of luck because the pass was never meant. It was not a it was a header that went wrong and sort of looped up. वही है ना 22 नंबर मैंने जो अभी बोला था, फुसको किसका क्या नाम है इसका? हाँ, अबू बसक फैजुलव. इसको साले को इसीलिए लाया गया है, आते ही गोल मार दिया. And that's the problem now. Now for India, the question is, what does India do? That's now the big question. Do you react? Because the question is, no, you have to react, because if you don't react, but this is the issue with Saras na, कि against big teams generally we concede in the first 15 minutes or in the second half first 15 minutes. Oh, foul, Suresh, on the goal scorer. But that was important. Otherwise it would have been gone.
इंडिया शुड कीप अटैकिंग. ओके भाई, वे देखना ही नहीं है मैच अब. अच्छा है. I mean, अभी तो भाई शुरुआत में. India should. We all would love India to be attacking, but the reality is, can India attack in this situation? That's the हाँ. question, now, na? Gurpreet's wife and daughter. Amrinder, sorry, not Gurpreet. Sandesh. I'm totally messed up. Sorry. This goal is, yeah. स्टार्टिंग में यार गोल पड़ जाए तो मतलब थोड़ा सा वो यार मूड ऑफ कर देता है पूरा. Now we have to be careful. केयरफुल. हाँ. Free kick Uzbekistan, just outside of the box. Dangerous position. We need to clear. Sinclair, let's see. What have you told? Masharipov, no, he walks away. Urunov! चलो बच Cleared गए. by Sunil. बच गए. भाई नहीं जीतने वाले सीरिया से हाउ सीरिया हैव प्लेड. हाँ अच्छा भाई. भाई लेकिन खेलना तो पड़ेगा. मैच जीते ना जीते वो अलग बात है. खेलना तो है ही 23rd को भाई, जो भी रिजल्ट हो. And this is what I was talking about last night. Na? This Uzbek directly have a different level of intensity. Huh? Intensity. Na? Now they have got that goal. They will spray the ball, make India run. And this is where India now has to show. साले भगा के मारेंगे गोल. दिक्कत वो है. That is the concern. That's the concern now. You have to now get into our shape, get the ball, play amongst ourselves. But we're not getting the ball now. विजेता भाई बोल रहे द वर्स्ट टीम इन एशियन कप स्टेडली. बट उसको भी भाई विजेता भाई हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि हाँ भाई हमें पता तो चला कि हाँ हम एक्चुअल में जो हवाबाजी कर रहे थे कि हम हो गए इंप्रूव. तो कहाँ पे है? But the question is, who will you saw what people were saying after the Australia match, right? I don't think the realization is there where we stand. That is my concern. Valorous effort. Yep. Again, outside box. Oh, the kid doesn't want India to give the ball away. Oh no! Opponent. Ball given away. Ball given back. बच्चा again intercepted. रख लेना. Uzbekistan are on fire. Fire. सर वो बॉल रखने नहीं देते क्या अगर वो उस पे जाए तो? नहीं, have to give it back ना. अरे बच्चे को तो इतना तो दे सकते हो अगर. It's a match ball ना, it's not a normal ball. हाँ. These are the high tech balls ना. This is not a 50 rupees ball that you can take ले लो. Oh. But वो बच्चे का मिलेगा तो वो आगे जाके खेलेगा. Oh, good saves, Gurpreet. Very good save, Gurpreet. Oh, that was a brilliant save. Brilliant save. India played against speedy opponents. India always play good against physical teams, but always struggle when speed is there. Vietnam, remember, yes, LM Tembain, and exact same point made by Arnav sir just a couple of minutes back. That was such a bad foul, Nikhil. That was such a bad foul. अगर एक और गोल हुआ मैंने जियो सिनेमा बंद कर दूंगा. इंडिया नीड्स टू प्लेस उज़्बेकिस्तान लाइक हंग्री वोल्व्स. ऑफसाइड तो नहीं, ऑफसाइड था क्या वो? नहीं था. ऑफसाइड था. नहीं. Nikhil lucky not to get. That was a really bad foul. Bad foul. जैसे सीरिया खेल रही है हम उससे भी नहीं जीतेंगे, फिर भी हम सपोर्ट करेंगे ब्लूज इंडिया. देखिए सपोर्ट तो एज अ फैन ऑलवेज रहता है, वो तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है. मतलब वो तो हमेशा से रहेगा. I said that before the tournament. Again, don't underestimate Syria. This is not the Syria we used to play regular Nehru Cup. This is a Syria. I mean, Syria is the countries at war. So therefore, they are going into the diaspora, especially from Central and South America, and bringing in those players. And in combination with a very, very experienced coach, Hector Cooper. Very experienced. आज सर उसने सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन भी स्मार्टली की है. आई थिंक जब वो फर्स्ट गोल कंसीड किया उसके बाद तुरंत वो जो सब्स्टिट्यूट लाए उसको भी दिखा. Hits the woodwork. अरे यार बच गए. क्या हो रहा है यार? 10 दिन पहले 10 मिनट में धागे खोल के रख दिए. 3 very good chances from Uzbekistan यार. But I said Uzbekistan have that class. They have that playing class, and you see how they're spraying the ball. And India's running. India's not in the game. India's not at all in the game.
Look at that cross. Wow. भाई 5-0 पक्का बहुत भयानक खेल रही है उज्बेकिस्तान. They are playing on a high level भाई. Now this all looks like they haven't played a football in life. But भाई that is the thing ना. हम क्या आप जब 0-0 ड्रॉ हुआ उस दिन भी हम फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा क्यों थे कि हम जितना आप डेवलपमेंट बोल रहे हो उतना है नहीं. फिजिकलिटी वाइज वी हैव Friends of इम्प्रूव्ड. Rahul being shown on the stands. No. Yes. Select Rahul, select one. Rahul selects all three. Come on, If guys. if you have the numbers, please pass them on. We will pass them on to Rahul very Rahul, yeah. Worst case, no, don't give the numbers. Give us their Instagram accounts. We will, ladies, we will. Rahul is available on all the social medias. So Snapchat, Insta, wherever you want to. Come on, Akash. Nah. अरे यार. Mm-mm. That's a foul, यार. Yeah. Oh, he's. Ooh. Nah, he's just gone over in the end. No. No foul. No foul. India needs to control this game real bad. कंट्रोल कैसे करे? प्लेयर तो होने चाहिए उस क्वालिटी के. कंट्रोल तो हमको भी करना है. कैसे कर ले? How is India going to control a match? India is not playing this tournament to control a match. India is trying to stay in the games and then try to create something. I think that's the most important thing for us. I think Igor Stamic is not happy with the referee's decision. Is he ever happy with the referee's decision? That's also a big question. अरे यार. But I think India needs to survive the next 10 minutes and maybe try and get into this game. Yeah. Because at the moment, Uzbekistan is, look at them cleanly playing around. Pusanov, the 19-year-old who plays for Lens. Oh, good ball. फायरबॉल बोल रहे कि कम से कम एक पास तो कंप्लीट. Oh my days. That was Rahul bad. Beke Sandesh. Yeah. Nice pass, Appu. Yeah, come on. Let's get out. बच गए. हाँ. अरे यार. No. Now Nasrullayev shows his experience and class. And if I remember right, he played against Manveer Nasaf against ATK Mohun Bagan. Uzbek fans happy? Obviously, they are happy. Rahul, calmly, quietly, yeah, good. It's an interesting one when Rahul Beke becomes your most reliable centre back. Huh? Centre back, huh? Oh, that's a good ball. They're allowing them too much. Hey, where does the second ball come in? वो किसी ने ऊपर से क्या बोलते हैं वो डाल दिया. Some Hiren threw it onto the field to slow down Uzbekistan back. Stop मैं him! तो Don't allow him to shoot. Oh God. Okay. Goal kick. Come on, guys. Keep the ball. Sharipov. Goal kick or corner? Goal kick. Goal. That was totally misfired. Okay, चलो बढ़िया है. संदेश. इसने उज़्बेक फैन ने भी हिमाचली ट्रॉफी कैसे पहनी है? हिमाचली जैसी टोपी. हिमाचल में ऐसी टोपी पहनते हैं भाई. A ball, ref. Yeah. Throw into India. Where are those Indian fans जो बोल रहे थे हम उज़्बेक से ड्रॉ किया विन कर सकते हैं? अरे यार. अभी सीरिया के दिन हम सब भी गायब हो जाएंगे जो बोल रहे सीरिया को कर देंगे. Possession by 67-33. I said from the start, if we can get a goal in this tournament, I would be happy. That's I think our aim. Still you said one goal. Last night. Yeah. I doubt that. Yeah, doubt that. I said that's my wish. Easily beating our press, which can be really, really dangerous. Yeah.
Or players can handle press very well when Again. they play ISL. Don't know what happens in international. Intensity, bro. What are Intensity. you doing, Suresh? Oof, baba. बंगाली में क्या बोलते हैं सर? बंगाली में इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये what are you doing सुरेश इसको? তুমি কি করছো? Not a good first 15 minutes. Yeah. One has to be very honest. India totally outplayed. Yeah. And now at least let's try and build from the back if need be. Keep the ball. See, unnecessary pass from Yeah. Anirudh Thapa. Absolutely. अरे यार. Come on, guys. Akash. Nice pass. चलो ball win. Oh, nice pass. थोड़ा सा कंपोजर रखो यार. Throw in. Very good. Throw in. Ball. Yeah. But you saw how Husanov used shoved his body, him. Yeah. And it was not a foul. That was just physicality Yeah, it was of not the guy who Physical. plays in the French league. 19-year-old boy. Absolutely. Manveer Come on, again guys. unable to Sir, hold on to the ball. Sir, why not our players are that kind of, you can say, physical? Oh my God. Oh, Rahul Beke. अरे यार 2 versus 2. Oh, that मर गए. 2-0. 2-0. oh. बच गए. For fuck. नहीं बच गए. क्या बच Sergeyev, गए own सर? goal. Nearly own goal and then Sergeyev. Terrible mistake. Rahul खोल दिए. Beke, not आगे sure भागे why. सब कुछ खोल दिए. Just whack it. What is he trying to do there? Mistake from Rahul Beke. Lose the ball and give the opportunity to. If they continue like this, 6 or 7, huh? He could have just whacked it. I don't know Last what match he for was Igor trying to do. Stemic. Last match of Igor Stemic. Unlucky Akash. He couldn't do much about it. Technical ability of all defense except Mishra is it. अच्छा वैसे आ रही है ड्यूक गेमिंग पे को भाई मनवीर से अच्छा मेरा गली का बच्चों का फर्स्ट टच है. वी हैव बेटर प्लेयर्स डोंट नो हाउ स्टार्ट एवरी मैच. कब होगा बेइज्जती. चलो भाई मैं चलता हूँ. अच्छा भाई टीम में आई डोंट हैव अ कैंप. अच्छा See, a camp, even if you train for 6 months, nothing will change. This is the quality we have. This is the reality. This is what I was saying the other day against Australia, that second half showed us. That this is the quality of Indian football. Everybody involved in Indian football should know we are not good enough. That's the reality. भाई क्वालिटी ही नहीं है. दीपक ज्योति भट्टाचार्य जी भी सेम बोल रहे हैं. भाई मैंने तो बंद कर दिया जियो सिनेमा. ओके इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट टेक्निकल एबिलिटी ऑफ. No, that is one thing which I should say to everybody. Don't stop watching. Support the boys. Don't stop watching the game. Support the boys. Support the team. But the reality is that where do we stand in football, in Asian football? People talk about the World Cup and stuff. We are trying to play. Where are we trying to play? Without 4 key players, we lack quality. Those 4 players wouldn't have made that much of a change. 4 players. That is our problem. Those 4 players. Guys, wake up. Guys, we knew we will lose, but at least we are trying to play. Get Brendan as soon as possible if we want even 1 point. We clearly missing Anwar Ali and Jigson Singh very badly. They have done their homework. Our mid 3 has not played together. As soon as we play to our midfield, the 3 press aggressively. अगर हम ये मैच हार जाए तो हमारा रैंक डिक्रीज हो गया. कितना हो जाएगा? 114 114 यार. 4 players excuse again.
दैट्स द प्रॉब्लम ना सायक चक्रवर्ती भाई, वी ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूज। देखिए कोई सी भी चीज कितना भी पॉजिटिव हो, उसमें भी कोई ना कोई एक्सक्यूज आप ढूंढ सकते हो। सो वी ऑलवेज ऑलवेज फाइंड दोस एक्सक्यूजेस। हम जब भी हारते, मलेशिया के सामने आ रहे तो हमने रेफरीज का ढूंढ लिया। देयर इज बीन ऑलवेज अ केस कि हम क्या बोलते हैं कि कोई ना कोई एक्सक्यूज, हम इराक के सामने ड्रॉ करे या हारे तो बोले कि पेनल्टी नहीं मिली इसलिए ड्रॉ हो गया। देयर हैज बीन, हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम तो एज ए फैन तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो स्टेक होल्डर, जो डिसीजन मेकर है, चाहे वो एफएफ हो चाहे वो हो, वो भी नहीं कर पा रहे। दे आर आल्सो इन अ लाला लैंड, सो दैट्स द बिग इशू। नॉट फॉर प्लेयर्स, मेन सिस्टम इज वर्स्ट, दे हैव ओसीआई प्लेयर्स। अच्छा, चलो चलो, come कम ऑन on. कम ऑन। अरे यार, Nothing. सुनील छेत्री यार, and Malaysia game, even without referee we should have not done those mistakes and win the match. Yeah, nice pass from Gurpreet Good, good. into the midfield. I think if we can score one goal here in first half, then second half would be much more interesting. Decent cross. अरे अरे यार, come on boys, very good, Nikhil, very good. अरे यार, Hey, foul, ref. Come on. Yeah. Good stuff, Suresh. we have top scorer one goal at least in the whole match. The fun one is actually it's not a foul, no? The Suresh was grabbing after him, holding, not able to hold him, and then he slipped. Oh God! ढंग से पास भी नहीं होता। Terrible pass. Terrible It's got pass. to be a better pass. Raul Beck is not getting even one ball wide. Yeah, that's a couple of attempts now, and he's messed up both. Chance. Oh, good chance. Oh, come on! Why did Sunil dummy it? Why would you dummy it? अरे यार, They gift you one and you still don't take the chance. Was he offset? Was he scared he was off? What? He thought someone was behind him. Yeah. He thought someone was behind him. Yeah. I think he thought Manvir was behind him. exactly. So this is the only chance if Uzbekistan take it too easy. If they take it too easy, then that's our chance to maybe get something. But I think his coach is also not happy with that thing. No, Sretko Katanec expects a lot from this team, no? And after that draw against Syria, I think a lot of people will now understand that how good Syria are, right? बट सीरिया सर, आज ऑस्ट्रेलिया का सामने मैंने गेम देखा उनका, उसकी जो पोजीशनिंग अंडरस्टैंडिंग भी है, पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग, वो भी सर मच बेटर है। आप देखिए जिस तरह से, मतलब हमारे मैच में हमने देखा था कि लेफ्ट साइड पे आपका गुडविन और दूसरा कौन सा प्लेयर था, अजीज बेहिज, जिस तरह से दो टीम अप कर रहे थे, सेम सिचुएशन आज ऑस्ट्रेलिया वहां पे लेफ्ट साइड पे करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि सीरियन डिफेंडर की, लेफ्ट बैक की, उसकी जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग थी और जिस तरह से उसकी स्पेसेस को रोक रहे थे, आप देखिए गुडविन ने इतने क्रॉसेस ही नहीं डाल पाया है वो। सो दैट्स द थिंग ना भाई, आप ऑफ द बॉल किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग है। One second. Interesting is also Mahesh Naurem is in the game, running a lot, but still totally out of the game so far, no? Yeah. This is dangerous in the box. Football was good before that. But you realize, what the difference is, These guys like to play into a situation where they get the ball into the box, and then that's the important thing. This time, luckily, Akash cleared the ball cleanly. Sretko Katanec telling someone in the center to run in.
And Uzbekistan leading 2-0 and the fans not too happy. That tells you everything. The question is, if Manvir is off, who would you bring in? I hope Changte is fine. And then supposedly not, but again, if Changte is not fit, I would rather keep Changte and rather not risk him today, and rather keep him ready for Syria. I think Changte could be an important player for the Syria game. Oh, Lord Udanta. Yeah, Lord Beke, I think. See, Fireball, I think it's a combination of both. Again, mistakes, yes, but I think, again, don't underestimate Uzbekistan. I think, we should give respect to these teams who are better than us. Yeah. What options do India have, guys? What do we have? Avoid being thrashed or try to get a goal or two into this game? I think now we have to avoid thrashing. The thing is, if we do nick a goal back, this anything can happen. That's what I would. I mean, I would always like to think that way. Interesting free kick position now. I mean, we can put it into But the box. that's the risk, na. That's the. Yeah, I know it's a risk, but I mean, The thing is now we have a -4 GD. So if we able to beat Manji ki wildest thought ki we beat Syria, then I think we are going to able to beat Syria by only one goal margin. I am not saying more than that. अगर yeah, बीट करेंगे तो भी एक गोल के मार्जिन से ही हम कर सकते हैं तो योर जीडी विल बी -3 सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट देन टू क्वालिफाई इनटू द राउंड ऑफ 16 -3 जीडी के साथ मुश्किल है मेरे को लगता है व्हाट डू यू से सर he's asked for the free kick whistle to be taken again. Okay, that was an interesting thing. Trying to get the ball to Sunil didn't work. ये टीम सीरिया को बीट नहीं कर सकता लिख लो दीपांशु सरकार भाई वो तो पता ही है भाई वो तो पहले से ही पता है नहीं कर सकता does Sunil want to go for a goal here? No, he's just putting it in the box. No. Decent effort. Okay, Not bad. Good. Very good from Rahul Beke, I think. Akash. Okay, Akash. Yeah, but it's not such a header is not going to bother the goalkeeper, no? Doesn't have the pace, doesn't have the position. Even if it comes on goal, the keeper can easily collect. Yeah. But that is officially India's first chance. Yeah, first chance. Ronaldo Nazario बोल रहे कि Samful can't pass the ball properly, can't defend. Watching Indian football is nothing but a waste of time. अच्छा आपने लगाया है उज्बेकिस्तान का फ्लैग नाम लिखा है रोनाल्डो नाजारियो और बात कर रहे हो इंडियन फुटबॉल की इंटरेस्टिंग Trevor Sinclair trying to tell. And you see in Igor Stimacz's face, na? He knows that his team is trying its best, but that this more is not possible. देखिए राहुल लॉर्ड बेके एक्सक्यूज तो कोई भी हो सकता है मैंने जैसे बोला कितना भी पॉजिटिव कोई भी चीज हो कितना भी पॉजिटिव मैच हो 5-0 भी आप जीते हो देयर विल बी ऑलवेज ए थिंग कि जो आप बोल सकते हो कि फॉल्ट निकाल सकते हो सो एक्सक्यूज तो भाई कोई भी देख सकते हो प्राइम गुरप्रीत वुड हैव ब्लॉक बोथ शॉट्स No, there was no chance for the second one. There's no How chance. is he going to block those two? No. Very close range. It's impossible to save. Best of the best keeper in the world also concede those goals. Right? 2-goal lead is said to be dangerous in football. Hoping for Uzbeks to make mistake. वो
वो करे ना करे वो तो पता नहीं, हमारे प्लेयर को मिस्टेक नहीं करनी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है. उज्बेकिस्तान इज बेटर देन अस ऑब्वियसली. डार्क नाइट भाई, दैट्स द डे लाइट फैक्ट. Second goal started with Manvir losing the ball. Second goal started with the Beke losing the ball. If it was Beke, he could have. Beke lost the ball. But the point is that there are enough opportunities to try and intercept the ball or try to clear the ball. And this is something, again, under pressure. Akash Mishra nearly fires the ball into his own goal. And then on the Goal, follow-up, हाँ. you see Sandesh is waiting for that second, and the Uzbek Yeah. player is already on the ball. And that's the Ball. problem, that these are these mini seconds where you have to react. And this is, again, a level of football which we normally don't play. Therefore, Muscle you will memory is be- not there. How to react? Mahesh dropped deep twice to make space for Akash, but Peke could not find him. Yeah, that happened twice, and the pass. Yeah, but the point is, again, mistakes are part of it. No, that's the thing. If you're asking Rahul Beke to square the ball from that position, listen, his first job is to try and clear the ball. अच्छा, अक्षता जी हमारे साथ है. अक्षता मैम फाइनली वो बोल रही है कि some big Twitter accounts tweeting Stimac out. कौन है वो big ऐसा ट्वीटर? Akshata, if you're around, join us. Give us. You should Race our round. हाँ, थोड़ा सा ज्वाइन आप के तो नहीं, वो अब तो वो बड़ी लीग में चली गई है सर. हमारे से अभी अच्छा. वो और सैन भाई और वो सब हमारे साथ नहीं करते. अब हम तीनों ही बचे हैं. सो हाँ. Yeah. Chance. Yeah. कौन ये बड़ा अकाउंट कौन ऐसा कर रहा है? Pranay has written, thank you for the memories, but it's time to go. #Steamuch out. And then Goats saving coach's job. Okay, got it. Steamuch out. Aswati has also written Steamuch out. Oh, it's already trending, huh? Okay. When I used to say it, people used to say why. Trending. Hashtag start हो गया ना. Again, this is again a proof. What I say yesterday happens tomorrow. No, that's the problem. No, it should happen yesterday. चलो hashtag start हो गया भाई सर. Hashtag started. So avoid 33rd minute, 34th minute. 90 stoppage, Football India. There are multiple accounts saying that. Keeper. Yeah. Play. Which is just trending now. So many people are. Okay, that's an interesting one. Okay. So there's a lot of people writing about it. Lots of people. Arnova sir is visionary. Dark Knight बोल रहे हैं. Need 50k trend. Fire FF instead. See, it's a lot of. See, a lot of things again are simple logic. It's not even difficult. It was like when I said, no, September we will get a problem with our scheduling. When the AFF said we will, good save, good Preet. Yeah. Good save. अभी भी खतरा बच गए. That was so simple. Manvir he had it under control. Didn't release it. I don't know what he was waiting for. I think Manvir needs to go. I think Manvir at the moment doesn't deserve to be in that starting 11. Sorry. Yeah, he doesn't. We are going 114 rank. तो भाई वो ही हमारा रियल रैंक था. वो तो हमने चीटिंग इन अ सेंस कि लोअर रैंक टीमों के सामने खेल के बढ़ा लिया था. It all depends on what happens, especially in the African Cup of Nations. Also, what certain teams do in this tournament. And Shayad, yes, India beating Syria. I don't see India beating Syria. This Syria is is of a higher level, and that's the reality, na? Yeah. बंदा उसके पीछे है तो बॉल फिर भी डाल दिया उसने. क्या कर रहा है ये बंदा? उसके पीछे है, बॉल उसने आगे डाला. वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इतना रन बना के वो क्या बोलते कि वो ओवरलैप करेगा. Oh my God! Come on, Nikhil. That was such a simple pass. अरे यार ऐसे मिस पास करोगे तो क्या ही बनेगा अटैक फिर.
एक भाई था, उसने मस्त सर पहले कमेंट किया था स्टार्टिंग में कि मिसिंग लॉर्ड प्रणय हल्दर, इंडियन वॉल विथआउट ब्रिक्स. See, a lot of people will make fun of Pranay, but if you see what Pranay did in 2019 in the Asian Cup, again, um, doesn't deserve it. Doesn't deserve it. But ठीक है. How many chances India created? आई थिंक एक आकाश मिश्रा का वो सॉरी वो उसने वो मिस्टेक किया वो भी था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका तो कुछ कर ही नहीं पाया. थोड़ी सी खाना खा लिया जाए. इंडिया Oh, तो nice. खेल रही है. Nice. This was good. Nikhil Pujari, get the ball in. Oh, Sunil. Nice. It's okay. Thapa. Back. White. Nice. Nikhil. Come on, bro. Oh, better Good, pass. good. Nearly own goal. अरे First shot on target for India. What? No, I was just joking. I was just joking. I was saying first shot on target for शॉट India. ऑन टारगेट. नहीं नहीं, कैसे भी आए, ऑन गोल भी आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई. Yeah, absolutely, absolutely. So another attack for India. Ui. Good cross. But now you have to be careful about the counter attack. चलो सर, हमारा ही रिबाउंड पे कोई अवेलेबल नहीं होता, बाकी सारी टीमों के रिबाउंड पे प्लेयर अवेलेबल हो जाते हैं. Ref. Yeah. Ego's team much not happy. Not at all happy. Velu not happy. Doctor not happy. Amrinder not happy. हैप्पी कौन है फिर? Oh, easy one. That's a chip over. Oh, okay. Yeah, that was a little too ambitious. But he saw Gurpreet was off his line. Yeah, he was. Yeah. But this is This is even poorer than the first half again, than the second half against Australia. We don't seem to have a strategy or a plan. You know, it looks a little clueless of what to do. And Nikhil Pujari has shown that he's a better attacking, most probably right winger than a right wing back. Maybe the option could be actually to bring in a Pritham Kotal and move Nikhil Pujari up one position. What? His tactics are perfect. What is his tactic? Nice, Suresh. Again, Manveer. Offside. Oh my God. I hope he's not played him on. Yeah, Rahul Beke played him on. That could have been 3, no? Very important. It was offside. Yeah, it was offside. For a second, I thought Rahul Beke is playing him on. Oh, he might have been playing him. No, he was not offside. He was not exactly. Offside. Oh, lucky. Oh, lucky didn't score. Otherwise, it's a VR decision. Oh, God. Yeah.
putting Gurpreet under a lot of pressure. Okay, good, Gurpreet. That was a No, okay, nice sorry. spread. If Gurpreet can get that in his game, the sort of perfect pass to the fullbacks, I think. Yeah, but the point, his problem is when he sprays the ball, right? Sprays the ball. As you saw also with BK, very often our players don't have the measurement of how to keep the ball in the game. The ball goes out. Yeah. I've seen this with Gurpreet quite a bit. I mean, he does overhit quite a few passes, even if it's like a normal long ball down the middle. If he can just sort of get that in his game. Rahul trying. Well done. Oh. Yeah, Okay. that was foul already. Okay, lucky. Otherwise, it's a penalty. Yeah. Urunov. Yeah, he's grabbing his shirt. Yeah, well done. And he got the right side, which is what I think our defenders need to do. Just stay on the right side. No, I said over. See, the defending part, BK is getting more often than not right. But the thing is, if you're expecting more out of him, it's going to be difficult. Yeah. So, finally. Hello everybody. Hello. दो मिनट के साइलेंस के साथ. I'm laughing because all of Indian football situation right now just feels laughable. दुनिया बदल दी, जज्बात बदल दिए, वो वाली सिचुएशन है. Trevor Sinclair is angry now with Igor Stimac. Where did you get me involved in this? कहाँ ले आया है? खुद तो चला जाएगा. कोई मेरे को कल परसों पूछ रहा था, ट्रेवर सिंक्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड होगा क्या? Nice pass. Rahul genuinely looks so worried. Rahul, it's okay with me. Oh, yeah, I mean, this is football. I can't do much. Okay, first corner for India. Come on, guys. Of the tournament. Yeah, of the tournament. I think this is the first corner of the game, if I'm not wrong. Did they get a corner? Yeah, they had a corner. They had Oh, it's not a corner. Oh, it's a throw-in. See, Rahul, wrong information. Fake news. Great. ट्रैवर सिंक्लेयर के सीवी में वो हो जाएगा ना. वेरी गुड यार नोरेम. अरे यार तो अक्षता, आप ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है. व्हाट्स योर थॉट अबाउट दैट? I just opened from आप उस ट्रेंड में ज्वाइन किया है कि नहीं किया आपने? सपोर्ट कर रहे हो ट्रेंड को? I'm off social media for 10 days. अच्छा, हाँ वो देखा था मैंने. 10 days. तो आपको कैसे पता चला वो ट्रेंड चल रहा है? I logged into Sports Khappi's account while watching this कि क्या चल रहा है मैच. So how can we that 10 days off from the social media? I mean, match चल रहा है. Like for me to not tweet about it and just keep things to myself is also a very big detox. नहीं, obviously. Another free kick for India. Come on, guys. Good ball in, please. अच्छा. Decent delivery. Shoot, Mahesh. Oh, come on. Good save by the keeper. अरे यार, नोरे Mahesh. Come on, corner. Finally, huh? Yeah. That was a good shot, yaar. Good shot. Good effort. On the volley, it was nice. Nice. अरे यार. Come on, guys. One goal before halftime and it's going to be fun. कितना मिनट दिया इसने? फर्स्ट कॉर्नर राहुल फाइनली. Yeah. 5 मिनट. चलो बढ़िया. थापा मेरे भाई, अच्छा सा डाल देना भाई क्रॉस. Decent ball. Oh, chance. Oh, Sunil. Oh. See. Oh, he's got to be putting that on target. Last match also he missed that one. Yeah, this one I think was a little. He could have done a little. Nah.
No, it's he's under pressure. Look, he's physically under yeah. pressure. Difficult one. This one is a difficult one. Okay, fair enough. Decent, not bad. Couple of chances towards the end of the half. I think Steamach has just checked Twitter. It looks like he's gonna cry. Is it weird that चेंजेस भाई चेंजेस अभी डिस्कस करने हैं. नेदरलैंड का सर्वर लगा है. अच्छा. Keep it. Nice up here. बच गया भाई. आज का दिन ही बेकार है. वो सुमित नागल भी हार गया. स्टार्ट Yeah. अच्छा किया था उसने यार. He won the first set and then unlucky. कौन सा दिन है आज? 18 तारीख. Thursday. थर्सडे यार. Anna moved on. बेकार डे है थर्सडे. That was a good thing. हाँ. Oh, nice, yeah, Mahesh. महेश इज अ क्वालिटी भाई राहुल. तो Yeah, absolutely. Yeah. उससे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ. बाकी ये थापा बापा देखो आलतू फालतू फासिस करते हैं. I still think Mahesh is very raw though. Like there is so much. If somebody is there, somebody good coaches him. There's so much you can get out of him. He needs to get out of ISL. His thing is, I think he needs to strengthen on his physical side. Technical side, he's very talented. 3-0. Oh, 3-0. ये साला ये इनके रिबाउंड पे प्लेयर अवेलेबल ही होते हैं. हमारा साला एक बंदा नहीं दिखता रिबाउंड पे. दूर दूर भटक रहे होते हैं. God, no coming back. There was never any coming back. At least this time we are We like will be- disappointing us like that. We can say हमने first half अच्छा किया. We won the first half. साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे. Manveer ball watching like. Oh. Yeah, but what is Manveer doing over there? Where is Nikhil Pujari is standing as a number 6 in the middle? Huh? संदेश जिंगान भी हैंड ऑफ गॉड कर रहा था. हाथ से भी क्लियर कर दो. Steamach will be furious in half time भाई. Furious क्या? मुझे लगता है. I mean, is there anything for him to say now? Of course, always. Obviously. You're the coach. Boys, Yeah. wasn't a good half. Try and do it better in the second. Do it like in the first half against Australia. Do you think he'll wait for another 10-15 minutes before the substitutions? The problem is who is there to be substituted. क्वालिटी में कुछ इंप्रूव होना ही नहीं है सब्स्टिट्यूशन से. हाँ. The question is again, right back with what I have. Pritam Kota has to come in, and Manveer needs to go off as well. That right side is our biggest problem. Our left side at least is decent. Was in the last game as is today as well. Changte and Shubhashish both weren't bad, and Akash and Mahesh are also trying. Look, the 3 men holding him. He's still playing it out. Today Manveer has been shocking. Awful performance from him. अरे यार हमारे 3 प्लेयर गुच्छे में रहते हैं. Half time. अच्छा हो गया.
ईगो स्टीवेज ऑन फायर. अच्छा. फायर बॉल भाई जब वो खेलते थे तब बोलते थे कि इसको निकालो, हमें क्विक प्लेयर चाहिए. अब ये बंदे आ गए हैं तो बोल रहे कि उसको वापस लेके आओ. दैट इज द प्रॉब्लम ना भाई. अगर 4 साढ़े 4 साल में हम वो नहीं डक्की कर पाए, डिसाइड कर पाए कि भाई कौन वो हमारे प्लेयर्स है. Rahul's friends. No, I'd switch it off. I don't know. I mean, like I half time then. You know which Acha. friends I'm talking about. Yeah. हाँ, yes. 1, 2, 3 राहुल नंबर प्लीज. I have no अरे One, idea. take two, 1 three. plus 2 plus Which one 3 you select? बोलेगा वो. 3. Select one राहुल प्लीज. I don't know. I didn't. I switched it off. लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट सेंटर. यार मैच में कुछ बात करने जैसा नहीं है राहुल, तो क्या ही हमको भी डिस्ट्रैक्शन चाहिए. हाँ, but shit. Come on. अच्छा We तुमको should वो have नहीं करना considered तो the मैच. third. हाँ, मैच के बारे में बताओ. चलो फर्स्ट हाफ के बारे में बताओ. नहीं, first. What are the positive for India? What are the positive for India in the first half? Positives? It actually We got a corner. Ah, I think at least there are a couple of patterns of play that they've sort of gone through and they've actually reached the final third. But yeah, again, technical quality, you can see the difference. It's not that hard. It's not rocket science. Huge difference in technical quality. But yeah, I just think we should have probably even 2-0, 1-0. Like I would have been like, okay, fine. You know what? If we get a goal, anything can happen. But yeah, 3-0, there's no chance. No chance. It's done. Anurag Kaushik बोल रहे कि third goal was the worst. I think that guy overlapped from like 2 pitches and no one could stop the crosses. वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, हमारी जो पोजिशनल सेंस है वो completely आउट ऑफ दी वो वे है भाई. हमारे बंदे कहाँ पे अपने आप को पोजीशन करते हैं डिफेंड करने के लिए. For that goal, Manveer was ahead of the man, and then ball watches and done. It's done. No sir, your thoughts about the first half? I think it shows where we stand, and I think that is something that someone needs to openly. Where we stand where nowhere. we stand. I want in to Asia we stand nowhere. Okay. We have to ask ourselves again. The national team coach question is one. The AFF has to answer questions. Also, the ISL and ISL clubs, I-League clubs, everyone who's developed players, big talkers who say, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं Indian football के लिए. What have you done? This is the players that you've produced. You produce shit. You produce rubbish. We need better coaching at youth level. We need a better structure at youth level. And we need dedicated people who really want to develop Indian football and not talk about it and do age fraud and all the kind of stuff, all shortcuts. This jugaad business in Indian football needs to stop. There needs to be the right people put in place to run Indian football. Otherwise, this thing will happen. And anyone who is saying that, oh, listen, 2024, we're better than 2011. Rubbish. Honestly, rubbish. Today, I am happy sitting here in Germany in the cold rather than being there in Doha, because this is embarrassing. Embarrassing. And it doesn't matter. It's not just the ISL, I-League, NFL before that. Everyone who's been big talking about Indian football, Indian football that. No, we know. बट आई थिंक काफी सारे लोग यहाँ पे क्या बोलते कमेंट में बोल रहे कि इसको ले आओ इसकी जगह पे. दैट डजंट एड अप एनीथिंग भाई. क्वालिटी ऐसी ही है हमारे प्लेयरों की, कोई भी खेल लेता. इट डजंट. That is the point. See, the 4 players missing. Do you think if 4 players were in this team, we would play differently? We would suddenly be challenging Asia? No chance. How naive have to be to believe that? Exactly. And it doesn't matter. This is the level of our football. We have to. The players are not playing bad because they want to play bad. Because this is a level which is too high for them.
Damn, exactly. That is the reality. This level of football, look at the pace of the Uzbeks. We are struggling. They're all over. We are playing players out of position. Rahul Beke is not a centre back. Nikhil Pujari is not a right back. This is all. That's another added thing. And that's the scary part. And I've been saying this since the summer. We have technical deficiencies in our footballers. Every team we've played since the summer, every team looked technically better than us. Yes. That is the scary part, where where we where we need to find a solution. And this, okay, we did this, we did that. No, this sugar coating makes no sense. We need to be brutally honest. Otherwise, let's be fans, let's dream, and in 10 years, 15 years, 20 years, we'll see the same thing. Because this is what I've been seeing. People create dreams, people create aspirations, but then things are not done. That's what I'm saying. The right leadership needs to be there. It starts from the top. And it's not just the question of the national coach. It is the question of the head of the federation. It's the question of who are the people running the technical team, who are the people who are running the ISL, who are running the whole structure of football. Who are our coaches? The so-called big coaches who are talking this, that. That is the reality. Our overall structure is a problem. Every stakeholder, and I don't take myself out of this because I've been involved in Indian football for the last 25, 26 years. I don't take myself out. But the point is, people need to listen. And I've been telling people a lot of things. People don't want to listen. They want to do their own agenda. That is the biggest problem. That is the, I think, completely agree with you on that, the agenda thing. I think everyone is there for their, you can say, personal interest in showing that we are care for the Indian football. Akshata, what's your thought about this performance, and how this affect the Indian football's जो hype थोड़ा सा create हुआ था, because this is embarrassing, to be honest. See, I am a new supporter of Indian football, and ever since I started following Indian football, मुझे हमेशा लगता था that we are, like sometimes even with Arunava, मतलब his frustration, sometimes I used to feel कि शायद things will change. I used to have that hope inside कि Arunava, you never know, things might change. But now, in this short span of time that I've been following the sport, मेरे को लग रहा है कि the frustration of the fans is so justified, because they have been seeing this go on for years and decades now. वही चीज हो रही है. System in itself is so flawed. There's no money coming into the clubs. We are paying our athletes such high amount of money. Are they deserving of it? No, they are not. We've just created a system which is not sustainable in the long run, or even now. It's just, how is it working as a normal business setup is also a very questionable thing. कैसे चल कैसे रहा है सब कुछ? कोई और organization हो तो वो अभी तक बंद हो जाए. It's just working out because certain people are involved and certain people want to carry on with it. But it's not a business setup which can work out, and we have to see it from that perspective only. भावनाएं अलग है, but we also have to see how sustainable is the system and how good, how can it trickle down to the overall development of Indian football. जो क्यों नहीं है हमारे पास इतने options कि हमें 4 अगर हमारे players नहीं available तो हमें इतना stress हो जाता है कि क्या होगा. क्यों नहीं है हमारे पास एक large pool of players जिनसे हम select कर सकते हैं? क्यों ऐसा है कि Akshata, we have a pool of players. Our problem is that the pool of players of 40-50 players is of the same level. Exactly. We don't have an elite level. That is our problem. Our thing is, again, with our age-cheating things, with our successes at under 17 level, we think we can do something. But the problem is, if you're playing 20, 22-year-old boys against 17-year-old boys, Uzbekistan beat England in the under 17 World Cup last year, right? They went out against the French, who played against Germany in the final. That is the level. Islam Akhmedov was there, the technical head, who used to be our head coach in under 16, under 19 head coach in 2002. That generation of players I remember Gauramangi Singh, he said to me, you know what? He's not the best, but this boy will go far. He trusted him. He helped him to develop. Shubro Topal, Shubhashish Roy Chaudhary, that whole generation of boys. But the point here is, it cannot be, when I see
and Suresh and all these boys who I've seen from when they were 15, 16-year-olds, when they're playing, coming regularly under Nikolai Adam before the Under-17 World Cup, that I feel that as a 15, 16-year-old, you are better than you are as a 22, 23-year-old playing for your national team. Why are we walking back rather than developing more? These boys were challenging the German under-15, under-17 sides in those days. Hmm. Yeah. And that's the Rahul, problem. Rahul, what are the changes you are seeing in the second half? Going for a all-out attack, or do you see we are going to be more defensive? What are the substitutions you are expecting in the second half? I think we should just play some football. We have nothing to lose. So I think bring on, if Changte possible, bring on Changte for Manvir, because Manvir has been shocking this half. So Changte for sure. Yeah, in midfield, if you can bring on Brandon, yeah, that would be great. Probably that's about it. I don't see any other changes that we can make. Can't really change anything else. Do you expect a half-time substitution or a 60-minute substitution? I hope the coach makes a halftime substitution, because I think Manvir cannot play. He can't be playing after that first half. See, if Igor Stimac is the kind of coach, if he realizes that this was a bad half, he would make 2 or 3 substitutions. Yeah. And it doesn't matter who he brings on, but he needs to make changes. The question is if he's going to do it. Because normally he's very defensive with his substitutions. That's the concern. Yeah. We have nothing Can to we do lose, any so- positives? अगर सर मैं आपसे पूछूं कि एक पॉजिटिव जो आपको फर्स्ट हाफ से बताना हो, रियलिस्टिक, नॉट अ sarcasm way. At least we tried to attack. We had the chance from Mahesh. We had the corner. Yeah. But the concern is that that we are unable to actually string 3, 4, 5 passes together in an attacking third. Yeah. अब सर मेरे को भी वो मतलब आई थिंक द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन फॉर मी इज द जिस तरह से मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि प्लेयरों ने जिस तरह से रिएक्ट किया, आई थिंक वो मिस पासिस और वो अवॉइडेबल चीज थी कि जिसको आप कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं प्रेशर, और जब आप पहला गोल कंसीड कर दिया इतना अर्ली, फिर वो प्रेशर बिल्डअप होता गया. एंड आई थिंक जो प्लेयर अपनी एबिलिटी है उस हिसाब से भी मेरे को तो लगता है कि अभी नहीं खेल पाया है. जैसे मनवीर का आप केस ले लो, आई डोंट थिंक मनवीर see the point बट आई is थिंक कंप्लीट not, डिफेंस. हाँ बोले of what we can play or what we cannot play. There are realities of where we stand, how good we are, or how bad we are, or where we lack, and that gets exposed. And to me, again, Nikhil is not a disgrace. Again, he's playing in a position which is not his natural position. Nikhil, actually, when he's trying to, playing in a more attacking position and trying his crosses, he was decent for India today. So just and the point here is, when you are under pressure, you see, for example, Sandesh is struggling today. Sandesh at the back line is struggling. Rahul Beke is struggling. Okay. Then you already have. Sorry to interrupt, sir. This is interesting. Uzbekistan make the half-time substitution. So they are going more attacking now in the second half. No, India bringing might make a debutant defender. कितने पिचेस है देखो सर, 1 2 3 4 5. Rahul, it's okay. Rahul को देखिए और बुरा लग रहा है. Rahul, it's okay. This is me when I watch it. It's very normal. Like it's fine. It won't. It's okay. Rahul उसके लिए आपको रेगुलर Rahul KP is on. Fascinating. I don't think that's the right change though. I mean, but okay. अच्छा, जोएल बोल रहे what Rahul doing here, BFC lost by. Yeah. It looks like Rahul Second KP is half come on started for Manvir. Maybe Manvir.
Yeah, no, Manvir. He's come on for Manvir. Yeah. Uzbekistan straight away in the attack. Masharipov doing some fancy footwork. Ball directly into the box. मयंक सखारे भाई completely agree. Win or lose, we'll support till the end. हाँ, Yeah. बिल्कुल वो रहना That has to चाहिए. be. Has to be there. So they've changed the right back. Abdur Rakhmatov with his debut today from Nasaf. आई थिंक उज्बेकिस्तान इज थोड़ा सा अटैकिंग क्यों खेल रही है पता है उनको भी अगर यहाँ पे 3 पॉइंट बड़े मार्जिन से लेते हैं तो सीरिया में भी इंडिया को भी हराता है देन दे माइट फिनिश ऑन दी थर्ड एंड उज्बेकिस्तान माइट अगर ऑस्ट्रेलिया से क्लोज मार्जिन से भी हारते हैं चिली के साथ वो सेकंड पे फिनिश कर सकते हैं. Yeah, they will try and score 1 or 2 more goals. They will As many know goals that as they will possible. need the goal difference. Yeah. ट्विटर भाई एक्सप्लोडेड तो नहीं हुआ है आई थिंक चल रहा है अभी कुछ भाई मैं सच मतलब ठीक है while we are on the Twitter thing, हाँ एक्सप्लोड हो गया. do you guys think that there are chances that Igor will give his resignation if the performance is bad in the last match as well? Resignation? No, that's the one. Yeah. That one thing I assure you, I don't think so कि that will happen. वो तो नहीं होगा. I don't think he'll. Yeah, let's see. Somebody else also asked this in the comments. So I thought that, what if? Oh. नहीं उसके पीछे रीजन है वो बता नहीं सकते but that's why. So Akash Mishra knocks out Apuya. Off the record. The reason of the behind the camera in the back. सही है. अरे भाई, this is Mumbai City. Why you need it next week? अरे यार कमर तोड़ दी भाई अपूया की. But hey, Nathan is playing well for Mumbai City. ठीक है, Nathan can play for him ना. By the way, पीटर केटकी ने शादी कर ली है तो सॉरी शादी ने एंगेजमेंट किया जहाँ मुंबई सिटी ने डाला है वो पोस्ट. Comments here are sarcastic or people are actually being very honest with the comments. मिक्स है. देव का पता नहीं लेकिन हम फैंस बहुत जिद्दी है हार रहे हैं तो भी देख रहे हैं. अरे वो तो मैच में नीरज शर्मा भाई आपको मैं हार्श ट्रूथ बताता हूँ वो मैच भी नहीं देखते भाई तो आप उतना ज्यादा उनके ऊपर वो मत करो. आपको लग रहा है कि आपके प्रेसिडेंट वो मैच देखते हैं. अरे सोचो भी मत यार ऐसा उसका दूसरी प्रायोरिटीज होती है. Oh, Akash shot. Oh, a chance. Post. अरे यार Sunil. Oh, अरे यार go there. Oh. This should be a score भाई. ये स्कोर नहीं करोगे तो कब करोगे यार? Second on the rebound, Sunil got to score. Oh, no. Oh, left foot. If he gets good connection, he scores. Sunil Shetty there. These are the chances you have to convert, right? Yeah, you just have to take these chances. This is the best chance we have got. Why? Just put it into a decent area. Bad call. पोस्ट पे हिट कर दी साले. राहुल केपी यार.
प्रदीप कुमार बोल रहे, if we lose this match with this scoreline, can we qualify for round of 16? No, bro. Because you are already with the -5 GD, so आप क्या बोलते हैं कि एक गोल से जीतोगे अगर सीरिया के सामने, फिर भी आपका -4 होगा, so नहीं होगा, फिर मुश्किल है। मोए मोए तो कब का हो गया भाई, वो तो स्टार्टिंग में ही हो गया, फर्स्ट हाफ में ही मोए मोए मोमेंट हो गया था। बट शुरुआत अच्छी की है राहुल, फर्स्ट हाफ ये सेकंड हाफ की हमने। Yeah. Little more positive. ड्यूब गेमिंग बोल रहे कि गोल कंसीड कर लिया पर देखने में मजा आ रहा है। अच्छा, we need Brandon as a 10. Let's see. Brandon, Not our day to be honest। का दिन कब होता है मयंक भाई हमारा? साफ के दिन, उसके बाद दिन ही नहीं होता हमारा कभी। Where is astrologer? अरे यार, मैंने आज ही एक फोटो देखा था, एक थंबनेल को किसी ने बनाया था, एक एस्ट्रोलॉजर है, गोष्ठी में छे। अरे राहु केतु शनि लग गया है। अच्छा, And there you see the problem now. When Akash is going up and they lose the ball, BK is completely exposed. yeah. Those passes have to be very quick if that has to work. You can't take a touch, chill, look around and then play. And Mahesh is physically so light that the opponents will always, go for that physical part of it. Sometimes it's a foul, but most of the times it's not, right? So it's not even a push and a shove. That's the problem. No? ये उज्बेकिस्तान के कुछ प्लेयर चाइनीज जैसे लगते हैं, मतलब शक्ल से। It's all in that border region, no? From Asian पूरा। from Russia to China. Mongolia. And there, Nikhil Pujari up front. चलो भाई रोक लो। एक बात अच्छी है, अभी सेकंड हाफ स्टार्ट हो गया है, हमने अभी तक कंसीड नहीं किया है, सो अरे यार At least Rahul KP is trying to play football. वेरी गुड, वेरी, अरे यार I'm waiting for that another new word I want to learn from the Mr. President today. क्या? आज मैं एक नया शब्द, एक इंडिया क्या बोलते इंग्लिश की मेरी वोकेबलरी का आज एक मैं नया शब्द सीखूंगा आफ्टर द मैच।
Yeah, but Anurag, again, that is the level of football where we are. That is bound to happen, that we will make mistakes. So you have to factor in the mistakes that we could make. And the first goal and the second goal, yes, you can say that's a mistake, a little bit of luck here and there, but in some sort of way, then there's also some quality in it. देखिए विनीत सिंह को it's just not about the players, it's a collective failure. It's a coach, it's a player, it's the AFF, everyone, it's a league, everyone is जो भी क्या बोलते हैं कि आपके स्टेक होल्डर है, सबका ये collective failure. It's not just about the one person, भाई. So don't blame only players, don't blame only coach. Everyone is involved in this. Yeah. Because But, no, they are making the statement, because they are saying that in last 10 years we made a huge progress only in physicality, not in technicality, simple as that. And without technical player you are remain in the 100 position, mark my word. In last 30 years we have been there, and next 30 years we are also going to be there if we don't improve our, you can say, technicality and skillful player. If we can't produce those kind of player, then we are moving around That is position. one, it's just one factor. I think our tactical awareness, how good we are in our positioning, all these factors. Again, we have become physically better, but technically we're not as good as we were 10-15 years ago. We're technically better 10-15 years ago. That is our problem. I know I have a question regarding the ISL. Can there be? I mean, are there talks within the system where people are considering maybe a reduction in the salaries that are given to the players, understanding the flaws and all? See, the problem is also our talent base is limited. No? So that is another problem why the salaries have dramatically gone up over the last few years, because the clubs are fighting over the same set of players. But the problem is not since yesterday. The problem has been there since the day the NFL started. Even in 1996, the salaries in lakhs in those days, where for Indian standard of football, the salaries were high. Now they're inflated. Again, the Saudis have inflated the salaries as well. But the problem is that we need to find a means and ways of making Indian football work. The clubs don't make money. And that's our big... बच गए. Play on. Play on. My question is that's a VR situation or not? According to you, sir, what are the changes you want to see in ISL? I think we need to have no, it's not just ISL by itself. I think it's the overall club structure. I think that's the most important thing. You have to have a clear-cut pathway from a local league into the ISL, so to say. That is one thing, which, yes, that's, you're having now a second division as a 8-team home and away. I think we need to, I always say less teams, but more quality. We see that in the IWL, 7 teams, even 7 teams is maybe 1 or 2 teams too much. 5 teams would have done. And you see that in the ISL also. There is the top 5 teams, and then there's the rest of the league. That is one thing we need to find. I League also, you need to decide is, am I going to blow up the whole thing, or do I keep it to 12 or maybe even 10 teams? Right? So yeah, that's an interesting one, which we have to see how does it work. Okay, that's Urunov. Okay. Oh, Sandesh is really lucky that he hit Akash and not Urunov. Yeah. He's gone samurai style. If he touches him, it's a penalty. Yeah. A nice turn, Akash. Oh, nice. We always play a reactive brand of football, and we are comfortable in that. Thereby, we struggle opening team that sit deep against us. We have to change, and this competition is a reality check. इसको मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बोला ना कि अगर our problem is against every team.
It doesn't matter. These are not, low sitting teams. These are teams where the quality is, oh God, Sandesh. Where अरे the यार quality, where these kind of teams are better than us. Then there are other teams which are worse than us. So we need to be adaptable accordingly. Again, Japan was a good example. Japan against Spain and Germany said, you keep the ball. We'll try and hit you on the counter. What did they do against Vietnam? They went all out against Vietnam. So that's where we need to get out. But first of all, the boys need to be secure with the ball, tactically aware. कमेंट्री पे मैं नहीं सुन रहा हूँ भाई, म्यूट पे रखा है मैंने, सो आई डोंट नो व्हाट कमेंटेटर आर सेइंग. अरे गए कर दिया फोर्थ. That's a terrible ball. No, lucky. बच गए. अब विनीत भाई तुम निखिल पुजारी की जगह पे आशीष राय को भी डाल दोगे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, ऐसा ही होगा भाई. Your कोई favorite फर्क नहीं Ashish पड़ेगा Rai. भाई. Ashish Rai is किसी no को भी डाल दो better. भाई, Pritam, whoever you want to put in there, doesn't matter. किसी को भी डाल दो भाई, इसमें कोई 1-8% का डिफरेंस हो जाएगा, उससे ये नहीं होगा कि आप गोल कंसीड नहीं करोगे. So I will come on, get guys. out of that thing, bhai. Now, Ashish Rai will exactly do the same. If you think Ashish Rai is much better than this, sorry. हाँ, बेस्ट राइट बैक इंडिया का हो सकता है भाई, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे तो नहीं हो सकता ना. वही तो बात है, इंडिया का भले ना बेस्ट हो. सुनील छेत्री भी इंडिया का बेस्ट प्लेयर है, इधर गोल मार पा रहा है क्या? दैट इज द थिंग ना भाई. इंडिया का बेस्ट बनने से आप थोड़ी ना फुटबॉल में बेस्ट बन जाते हो. बच गए. सब्स्टिट्यूशन कर भाई, सब्स्टिट्यूशन कर, या नहीं खुलेंगे? थक गए बैक लाइन तो. अच्छी बात है, सेकंड हाफ में कोई नहीं कंसीडर किया है. स्कोर लाइन स्टिल 3-0. अच्छा, सक्सेस जोन बोलो, मैं तो बंद कर दिया. बंद नहीं करना चाहिए भाई. सही सर, मेरे को एक समझ में बात नहीं आती कि फैंस तो चलो मतलब एक्सक्यूज दे दे कि हम इस वजह से हार गए, वो हो गया, Oh, ठीक है. Sandesh, lucky. अरे यार बच गए. लेकिन ये जो डिसीजन मेकर है ये भी मतलब रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है. उनको भी नहीं दिखता क्या कि ये क्या मतलब कहाँ पे है और क्या मतलब वो चीजें करने की जरूरत है. फैंस तो चलो, फैंस का तो ओपिनियन होता रहता है, कोई ये ओपिनियन देगा, कोई वो ओपिनियन देगा. Sadly, everywhere in this country, not just in the football. हमें अपने flaws दिख नहीं रहे. The less said about it, the better. बेटर. So it's got to be a yellow at least. फ्यूमिंग. सुरेश के ऊपर फाउल. Okay, वो बोल रहे तने जावा दी दो तो पहली बार. He'll come as a player. He'll say, "Listen, I touched the ball," and then he'll say, "This is a dangerous play." That's the problem.
मयंक भाई अभी भी आपको भाई लगता है हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे भाई? अरे यार। As crazy as it is, one win, and who knows? It's possible. अरे 23rd तक तो वो चलाना पड़ेगा ना कि हम जीत सकते हैं। That cross, हाँ, Nikhil. 23rd तक व्यूज के लिए वो चलाना पड़ेगा ना कि हम जीत सकते हैं। फिर फिर क्या बोलते 23 को सब यूट्यूबर्स को साथ में बैठ के रोना चाहिए। हाँ हम तो बोल ही रहे थे हारने वाले हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। No, all of them should शोक excuse सभा रखनी themselves. चाहिए। All of these PR machines should excuse themselves. नहीं एक शोक सभा रखनी चाहिए ये एफसी एशियन कप की। उसका कैसे व्यूज लेने हैं चाहे इंडिया जीते या हारे, फर्क नहीं पड़ता। हमारा टेक्निकली हमारा कंटेंट भी इंडियन फुटबॉल के ऊपर ही है, तो हमें भी फिर बैकअप ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे ना। अरे आनंद आनंद मुरु हुए, सही बात है, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। ठंड बहुत है भाई, एक अच्छा सा क्या बोलते हैं कि रजाई लेके भाई सो जाओ, उससे बढ़िया चीज नहीं है दुनिया में कोई। 8-10 घंटे की जो नींद है उससे बेटर सेटिस्फेक्शन कोई चीज नहीं दिला सकता आप, तो वो करो भाई अभी। वो करने का टाइम है, ज्यादा सोचो मत। Uzbekistan is now playing again a little bit like in the first half, huh? Letting the ball spray. Yep. आ रहा है Good move. मेरे को दिख रहा है, गोल आ रहा है, गोल आ रहा है। Good movements. Goal is And coming. we are unable to close down the gaps, huh? Now even Sunil is dropping back and trying to defend. आनंद भाई बोल रहे 2011 से यही सोच रहा था, ये सोच के आ रहे दोस्त बहुत बार रिजाए से और भी। Oh, good ball. Can he keep it in? Yeah, he'll keep it in. The sad part is, if we could play like Uzbekistan a little bit. If we were able to play a little bit like Uzbekistan with the ball, with the coolness, yeah. You don't need to make your points about Ashish Rai. ना उसका मैं आंसर दे देता हूँ। अरे लाख गुना भी आशीष राय पुजारी से लाख गुना भी बेटर होगा ना, तो इस लेवल पे नहीं टिक पाएगा, बस वो वाली बात है भाई, चाहे लाख गुना भी बेटर हो। मूड ऑफ हो गया भाई, होप खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता इस टीम का टाइम। इतना टेंशन मत लो भाई, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ स्पोर्ट इज एंटरटेनमेंट, तो उसको उसी तरह से लीजिए, एंजॉय कीजिए उसको ज्यादा। It is about level, ना? See what Ashish Rai played in the AFC Cup. So then I think that answers your question very directly. Oh God, lucky. बच गए। Akash Mishra now I think has saved 3 or 4 times, huh? Now, last man. नहीं, आकाश played good. आकाश आज अच्छा खेला है. He done everything. Yeah, Akash has been probably the best player today. And you realize, the Indian players also with in their faces, they're
they're trying, but they know that they're playing an opponent which is sort of much better than them. Na? 8 That's शॉट the लिए है sad सर part. अभी तक हमने. 8 shots by India, 13 by But Uzbekistan. but that is always, na, I told you, that her whatever shot is added to that. It doesn't show you the quality of the shot. सर साफ टूर्नामेंट कब है? साफ कब है? 2 साल में होता है ना वो? साफ नेक्स्ट वीक हो रहा है. नहीं वो नहीं है, सीनियर का. हाँ, सीनियर का. अच्छा, नेक्स्ट Igor Stimac needs to save his job, na. He has to win a जॉब. trophy. हाँ. नहीं वैसे जनरली 2 साल में एक बार होता है ना वो. हाँ, but the last one was delayed. हाँ. Chance. नहीं, Oh, No. अरे यार, राहुल केपी ने वो चाइना में गोल नहीं मारा था. माजा बड़ा फैंस आर ऑन स्टैंड. See, and that's the problem. See, you realize the second he looks up, that is where he needs to play the ball. In Exactly, international exactly. football, you will not get the chance. exactly. He had to cut it back a second before and Oh, Ishan Pandita and Brandon Fernandez. with Brandon Sunil Fernandez. and Yes. Thapa. थापा. So sadly, Good. goal for Sunil. This is good. Interesting substitution. हाँ भाई, ऐसा तो कुछ करो तो मजा तो आए थोड़ा सा देखने में कि हाँ बस कुछ नया हो रहा है. नहीं तो वही सेम चीज. But Ishan Pandita coming in as a striker or centre back? स्ट्राइकर. Sure. ऑब्वियसली सर स्ट्राइकर. सेंटर बैक और भी है ना हमारे पास तो. Goal! Oh! अरे यार, Rahul Beke. We've had our chances weirdly in this game. Yes. We've had our chances चांसेस. हाँ, Yeah. again. चांसेस हम मिलते. और अरे यार, क्या कर रहे हैं यार. अरे आज गेमर ब्लॉग्स पे आज हमारा दिन ही खराब है भाई. सभी जगह पे मार रहे हैं. टेनिस में हार गए, हॉकी में हार गए. At least in hockey, you lost against Germany, no? हाँ, कोई नहीं देख लेंगे आपको. टेंशन मत लो. क्या फुटबॉल में? ओलंपिक में, हॉकी में, फुटबॉल में नहीं. क्रिकेट में आ जाओ. दम में तो जर्मनी को बोलो क्रिकेट में आ जाए, हो जाए. जर्मनी खेलता है, लेकिन उसका टीम तो जर्मन नहीं है ना. वो इंडियन ही है पूरा. ऐसा ही होगा. यूरोपियन कंट्री की टीम ऐसे ही है सारे. नेदरलैंड का भी देखो आप. इंडिया, पाकिस्तान और वहां के ही प्लेयर है ज्यादातर. इंडिया के पास पॉपुलेशन का एक फायदा है ना सर. एक टाइम ऐसा आएगा 100 साल बाद कि क्रिकेट में सभी कंट्रीज की टीम में इंडियन प्लेयर्स ही होंगे. तो बेसिकली इट्स इंडियन थिंग. क्योंकि इतना ज्यादा वो क्या बोलते कि वो हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं. सो इवेंचुअली वो होगा. एक टाइम ऐसा आएगा. There's so much cricket fever on कि कहीं और पैसा, किसी और स्पोर्ट के पास पैसा ही नहीं है. Thanks to the World Cup and the IPL lined up. Again, a very difficult season for this sport. Interesting substitutions for the Uzbeks, taking off their two most creative players, giving two youngsters a chance, and they will want to prove a point now. They want as many goals as possible to better their GD. And लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर 1-2 गोल से अभी हारे तो दिक्कत नहीं आया है वहां पे. वैसे मेरे को लग रहा है कि वो ड्रॉ होगा या जीतेगी उज्बेकिस्तान. सर चांस यार राहुल, सच्ची इस मैच में चांस मिले यार हमको 2-3 ऐसे. एटलीस्ट एक गोल तो डिजर्व करते हैं यार. कैसा भी खेलो, 1 गोल भी डिजर्व. We should have scored. I think we should have at least taken that crazy, those 3-4 shots we got continuously. One that we should have scored from. What are your views on Sunil's performance in both the games? Okay. There's nothing much he could have done, I think. He's running. Yeah. He had a chance each in both matches. I think the chancing of Australia could have done better. Today was okay.
But again, I think any striker for India in this situation is difficult. Okay. This is why आदत sometimes, नहीं ना गोल के आगे खेलना. अच्छा. yeah. So sometimes I feel अनुराग भाई like, मेरे को नहीं ना, नो डाउट इज वर्क हार्ड, बट मेरे को उसका उतना ज्यादा वो गेम में इम्पैक्ट उस तरह से नहीं दिखा जिस तरह से, मतलब उसने जिस तरह का वर्क किया उसने अपनी तरह से डेफिनेटली. He's not been in form, na. हाँ. Even that's the problem, na. Even if you look at BFC form, it's not been too good. Again, he's 39. राहुल आप लोग क्या कर रहे हो यार? क्या लीडर लेजेंड कैप्टन को आपने ऐसा बना दिया यार. 39 is ऐसा he's मत done. करो यार, तुम ऐसा मत करो यार. No, but no, I think he's still our best technical player. The problem is in these sort of games he can't get into the game, and that's why I feel like he should always play a little deeper in games that we don't have the ball at all. So at least he can influence it somehow. Because he's not going to get chances. झिंगान. अच्छा भाई, दीपक सरकार भाई आगे भी डाल के वो क्या करेगा? आगे वाला बॉल लूज करके उसको ही फिर डिफेंड कर रहा है, तो उससे अच्छा है भाई कीपर को ही दे दूं भाई उसे, ताकि ज्यादा डिफेंडिंग तो ना करनी पड़े. एक फॉरवर्ड पास वो करेगा, वो सीधा ही दो पासिस में क्या बोलते कि बॉल लूज करके उसके पास आएगा. See, Mahesh has the ball. Akash goes with him. Yeah, see, Mahesh can't lose the ball there. He's got to do a little bad giveaway. 3-0 win Uzbekistan are against terrible with their finishing, luckily. Huh? They're terrible with their finishing. That's a saving grace, no? These teams are not that good, no? We can be happy we're not playing a Japan or a Korea or a Saudi or an Iran. I think that would have been. इसीलिए सर मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे ग्रुप में है तो वो उस सेंस में अच्छा है, रादर देन ईरान, साउथ कोरिया और जापान. अगर इन चारों में से आप चूज करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर ओपोनेंट देन देम. Think about against Japan, would have been disaster. They would have run us to the ground. वो तो भगा भगा के मारते हैं सर. Ronaldo Nazario बोल रहे कि I need POS and OCS instead of this bunch of Indian homegrown player. That should be our first priority. Now second should be the friendlies against this kind of nations for progress in football. Akshata, any report from Delhi about OCI and POS? Sport Khabri. Exclusively reported by Sport Khabri. Good save by Gurpreet. The last real update was that only, जो Mr. Jaishankar ने बोला था कि the talk it's a very difficult thing, dual citizenship and all के बारे में, जो उनके थ्रू आया था. बस वही एक रियलिस्टिक वो है, बाकी सब बातें हो रही हैं जो बैक एंड में AFF की तरफ से कि हम लिस्ट बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. That's not something that I take as an update personally. वो नहीं आता कि दिल्ली की गलियों में चर्चा है उस तरह से. Lutyens considering the global conflicts that are arising, there's so many countries at war right now, तो उस हिसाब से भी complexities तो बढ़ती है इन सब चीजों से. पता नहीं कैसे होने वाला है. Like we have, even with countries we have had friendly relationships, we are having diplomatic issues now. तो वो सब भी इन सब decisions में reflect करेगा ही ना. घनश्याम वर्मा भाई बोल रहे कि कल्याण चौबे जी क्या सोच रहे होंगे अभी इस मैच को देखकर? वो सोच रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन कैसे जीतूं और एमपी कैसे बनूं. ये उसके दिमाग में चल रहा होगा भाई, क्योंकि अभी इलेक्शन को भाई ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो वो अपने टिकट में लगे पड़े होंगे कि यहाँ से टिकट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा भाई.
Yeah, Anurag is right. We're lucky Uzbekistan finishing the second half. Bad. बेड हाँ. एक एक चीज मेरे को काफी ज्यादा मतलब वो लगती है एस्ट्रोनोशन कि ये जो मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं बड़े पोजीशन पे होते हैं ये लोग इतने ज्यादा मतलब अगर हमने कुछ मतलब ऐसा कुछ हो जाता है हमारे से कोई फेलियर हो जाता है तो तुरंत हमारे चेहरे पे वो दिखता है कि मतलब तुरंत हम वो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं ये लोग दूसरे तीसरे दिन एक वीक बाद देना अब क्या बोलते हैं कि सूट बूट पहन के हंसता हुआ चेहरा फिर से इंडियन फुटबॉल इन सेंस कि अभी हम फुटबॉल बोल रहे हैं कोई भी फील्ड हो फिर से सपने बेच रहे होते हैं हम साला ये नहीं कर सकते मैं तो नहीं कर सकता एटलीस्ट मतलब तुरंत आप वो क्या बोलते हैं कि वो थोड़े कि भाई मैं लोगों को बोलूं कैसे कि भाई हम एक फेलियर लेके आ रहे हैं और अब मैं बोल दूं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे इन लोगों को तो मतलब एक इतना कन्विंसिंग लगता है कि यहाँ पे हो जाना है फुटबॉल में बट कभी कभी आई फील दैट ऑप्शन भी नहीं होता ना मतलब अगर आपके अंडर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो इवन टू गिव देम होप इवन व्हेन यू आर फीलिंग लेट डाउन यू हैव टू शो देम दैट फेस कि हाँ उम्मीद है या कुछ है और कितनी बार ऐसा होता है दैट प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं आपका बिल्कुल भी इच्छा नहीं है बट यू हैव टू गेट अप एंड go out and show your face and lie to yourself and to other people because there's no other option even for us to bring in more money to Indian sports हमको Indian football हमको जाके झूठ तो भले ही हम कन्विंस नहीं है हमें दूसरों को तो बोलना ही पड़ेगा नहीं जी बहुत ही अच्छा है इट्स लाइक विद योर चाइल्ड नो इवन व्हेन यू नो योर चाइल्ड इज स्टूपिड यू विल गो एंड टेल पीपल नहीं नहीं हमारा बच्चा कर लेगा मेहनती है बस आलसी है नहीं कर पाता राइट सो द सेम इंडियन फुटबॉल में भी बैक बेंचर है फिर तो लास्ट ही आना है नहीं मतलब फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है ऑप्शन नहीं है लीडरशिप पर्सपेक्टिव में तो है ही नहीं ऑप्शन ना व्हेन यू आर इवन व्हेन यू आर गोइंग डाउन यू हैव टू लाइक शो योर फेस अनफॉर्चूनेट सक्सेस जोन पे भी मैं भी बेचता हूँ भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ भाई व्यूज के लिए भाई करना पड़ता है क्या करे भाई See, I think it's a mentality thing. I always say here in Germany we do we are maybe too negative sometimes in the sense, right? I mean, but I think it's important to address the issues and the problems that there are because otherwise you will never improve. And I think इसके अंदर आ रहा है सर people are fooling the system in saying what they say. It's very important for us, I think, to understand that if we want to develop, hard decisions are needed. And you know, sorry Anwar, please go ahead. नहीं बोले I had a different question altogether. Sorry Anwar, please go ahead. No, it's I think sometimes hard decisions are needed. दीपक टांगरे आ चुका है भाई द वे and it's we have to be honest to ourselves that things will not develop and evolve. And again, when I said in the summer, great results, but again, where do we stand? And again, we stand exactly where we were standing before. In the worst case, if we don't watch out, we'll drop even further. Everyone else around us is developing. And Igor Stimac said that the other day. He said, we are developing, but we're developing too slow. Others developing faster than us. Faster. And we need, again, you have certain views, but where are these young technical players? I don't see them. I know. Can this also be the reason for false hope that some people have that the teams that we often play against are not very high-ranked team, and like so on the field it might not look comparatively. हमें उतना पता नहीं चलता how far behind are we as compared to those teams. So that can also be a reason why some fans have those unrealistic hopes, right? That we are doing better. I remember India qualifying for the AFC Asian Cup in Kolkata, and I was there 4-0 against Hong Kong. And Renedy was sitting next to me. Renedy said openly to the AFF, you know what? That result actually flatters us. And if you say the other day how Hong Kong played, then it does. And that's the reality, is that we, again, Asian Cup qualification is a must for us. It's a minimum for us.
But on the other side, it's how do we get to a situation of not only being part of this 24 team tournament, Udanta now coming finally. अरे यार And स्टीमेच अभी तक मैंने तेरे को गाली नहीं दिया था, अब दे दूंगा यार. cross Udanta and goal someone, doesn't matter. Hoga. The point here is we're here, 24 teams, Asia. Okay. How do we get into the round of 16? How do we in future get into the quarterfinal? That needs to wait. And in 2019, we were a little further down the road. The group was a little easier with Thailand, UAE, and Bahrain, but we still couldn't make it. Because against Bahrain, again, Anas injured himself in the warm-up, went off in 2 minutes, so we didn't have a extra substitution. Ronaldo was limping for the last 10 minutes. That's why he conceded the penalty. These are realities. So, yeah, these are realities, and we need to try and build something, and then see what happens. Akash still on the ground after that heading. Yeah, would have hurt. टाइम भाई अभी भी 4 मिनट 3 मिनट है, प्लस आई थिंक 5-6 मिनट मिलेगा, सो 7-8 मिनट बाकी है भाई अभी. Currently, sir, your prediction is right, 3-0. Mine was 2-0. So आपका सही चल रहा है अभी. What was Rahul's? Mine draw, 1-1 draw. I can never predict loss. I had also predicted a draw against Australia. Yeah. It doesn't matter which team it is, Arsenal, India, BSC. I can never predict a loss in favor of my team. I mean, This sport coverage guys are The hopeful people. hopeful Yeah. people, good people. Three nil win against Syria. We will be there no matter what. If we can nick a goal here and produce a 1-0 or a 2-0, That's a foul, best भाई. thing that Clear yellow card दो. Fifth Minamino and Almardi. अच्छा. Top scorer. भाई कभी नीतीश शर्मा बोल रहे भाई, कभी कभी लगता है हम 100 रैंक पे डिजर्व नहीं करते. डार्क नाइट बोल रहे वाटर ब्रेक नीड्स टू बी स्टॉप इन आईएसएल. अच्छा. Average age-wise, which is the आनंद मुर्मू youngest team? तो आया था उसका वो, उसमें आसियान का जो पेज है उस पे आया था, चेक करना पड़ेगा. बस उसमें आसियान टीमों का ही आया था वैसे शायद. आनंद मुर्मू इज इन शायरी मोड. जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए. अच्छा सर, हाउ डू यू सर्वाइव इन दिस लास्ट 22 years? 26. 26. I swear I have the same question. राहुल को संगत का असर. Why one संगत में player? बताया ना राहुल. If two players can do the foul, no? खुद के प्लेयर के ऊपर ही भाई वो कर रहा है यार. This is good. Second half में we didn't consider any goal.
Anurag bhai ka question ki what could have been done differently today? What are the probabilities we have? Differently, I don't think मेरे को तो anything. I लगता है mean, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर हाँ, कुछ ज्यादा कर yeah, सकते we I think couldn't. I would have not played a there are five-man backline. I would have played a five-man backline. I think I remember, like, even with the 5-man backline, the manner in which we conceded the first was just, oh, you can't really do much about it, right? Like, I mean, it loops. The guy's striker's going for the header, it loops. He's completely mistimed it, and then it falls to the other one. Yeah, 5-man backline probably to keep the score down a little more. उसका आंसर आपने नहीं दिया. How do you survive? See, the point is when you don't, a national team is not something which you decide of watching. I think that's something which I always say, right? I watch Germany and I watch India, and I will always watch them and support them. But I also will tell them, both teams, that when things are, again, with Germany, it's rarely happened, but it's happening over the last few years. That even there, things are going wrong. With the talent Germany has, I mean, seriously, Argentina world champions is a joke. Seriously, that team does not deserve to be world champions. It shows how Yeah. bad football is, right? But okay. And here with India, I would have thought 2019 we were there in the UAE. We had some great days, especially that night against Thailand. And you thought we were a little further down the road. The start of Eco Steamers was very good in 2019. That match against Oman where we led 1-0 and sadly couldn't finish it off, so to say, and lost 2-1 in Guwahati in the end. The draw against Qatar, there was a new belief in there. But I don't know, again, all the PR and all that has been going on, the reality doesn't add up. This is where we stand. We have no chance against, counter chance for India. And there you see Ishant Pandita has no match practice. Vinit saying now, I think 2019 was better outing than current 2023. Yeah. I don't need to talk about possession football and, that I have more of the ball, this and that. I have to practically see what kind of players I have and if I'm picking my best team. And that is something which I don't see that has happened over the last few years, months. Oh, what a hit. What a hit. Oh. Iskandro? कौन था? It could have been. That's a Cracking. easily that cracking shot. Iskandro. No, Wow. Iskandro था ना वो 9 ओवर वाला. मुंबई सिटी का गोल याद आ गया वो. What a strike. What a strike. If we'd Same lost ऐसा ही 5-1, strike मारा था 6, उसने मुंबई सिटी के सामने. if we'd lost 5-1 or 6-1, yeah, it would have been good. Because again, I think that 3-0 again gives people to run away and say, "Okay, we were not that bad." But we go to the second half. They won't say. Yeah, but it's more. It has more to do with Uzbekistan being incompetent of scoring actually, and secondly, not putting that much of pressure. They were happy with the 3-0, which is an interesting thing. Looking at the group, I would have thought Uzbekistan would look at and try and score as many goals as possible today, but. Knowing that also Syria only lost 1-0 to Australia. हाँ ट्रूथ भाई आपका पता है भाई आपने बोला था 3-0. Uzbekistan didn't want to push. But it looks like Uzbekistan now wants to at least score another one. Yeah, Uzbeks had mercy on us. Yeah, I guess so. I think so. Done. Yeah.
अच्छा हो गया खत्म मेरे में तो हाँ हो गया सो इंडिया लूज बाय 3-0 and very hard loss to Solo, to be And honest. then you see The first Steamers going over to Katanec, and it's like saying, most probably said it in Serbo-Croatian, most probably said, you guys were much better than us. Yeah. सो आई थिंक 10-15 मिनट ही हम करेंगे पोस्ट मैच, उसके बाद जाएंगे। आई थिंक सब काम भी है सबको। सो आई थिंक 10 मिनट में फटाफट रैप अप करते हैं। तो राहुल तुमसे शुरुआत करते हैं भाई, सबसे छोटे तुम ही हो। सो बताओ भाई कि कैसा लगा मैच, क्या अच्छी चीजें हमने की, अच्छी भी चीजें कुछ की है, ऐसा नहीं है कि पूरा मैच ही बेकार खेला है। सो उसको बताओ थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या चीजें हम अच्छी कर सकते थे Quickly, वो we'll just बताओ। start off with the positives. मैच I के think बारे में we बताओ, created, बाकी इंडियन we फुटबॉल में created, तो प्रॉब्लम है। exactly. So positives, I think we created a few chances, a couple of good chances to score. Actually, it was not just half. It was not a half chance or sort of we just it just happened. But we actually created moments that we could have really got on the score sheet, but we didn't. Um, yeah, but those are the sort of attacking positives that you can take away after that performance against Australia, where we basically created nothing. Um, But yeah, unfortunately, in these kind of games, we can't lose the game in the first 10, 15 minutes, which we did. You can see 2 goals in the space of 20 minutes. You're basically you've lost the game there. So in these sort of games, yeah, we can't. एक तो राहुल, तो आपने जैसे बोला कि हमने यहाँ पे चांस क्रिएट किया, तो कौन से गेम ने आपको ज्यादा डिसअपॉइंट किया, ऑस्ट्रेलिया वाले गेम ने या इस गेम ने, इंडिया की I परफॉर्मेंस think से? Australia. I still think Australia was more disappointing for me because I think we did nothing in that game. This game, I can still sort of be like, okay, the first goal, a little lucky. Uzbekistan were of course any day better. They were much better than India. Let's just say that. But I think India, from an Indian perspective, was more disappointed in the first game because I think this game we had a little more output. Akash, you could see, was a real attacking output. That's, I mean, outlet for us. If you want, you can just get the ball to him. He can literally run from our defense till the other half and probably put in some crosses. So he was a real positive impact for me. But yeah, I think for me the Australia one was more disappointing than this. But this one's of course more frustrating 3-0 because we lost the game early. There's nothing to look forward to in Australia. At least halftime 0-0, we still had something to look forward to. But this game, yeah, we didn't really have much to look forward to. But I still think the performance was better in this one. Akshata, your thought about the match? Yeah, I mean, Rahul is right. अगर आपका first 6-7 minutes में एक goal you give away one goal, so it's very difficult for you. Even from the fans' perspective, आपको लगता है कि there's no hope, like you start feeling down from that very moment. 20 minutes में you are giving away 2 goals. You are already in that zone where you are feeling lost. So I just feel that I didn't want to watch the match, to be very honest. I also had that feeling कि बंद कर दो, क्या फायदा देखने का. But we continued because we were doing the live, so we ended up watching the match. But it was, and for me, I think because I have a different viewpoint from Rahul's. मेरे को ऑस्ट्रेलिया मैच में उम्मीद ही नहीं थी कि हम कुछ अच्छा करेंगे. I was like बहुत ही it's not going to be easy for us. So scoreline, of course, does not really justify the performance of a team. I completely agree with here. But today I just felt that because उम्मीद ज़्यादा थी, so ऐसे और लग रहा है that we could have done better. Aruna sir, your thoughts about the match? I would say unexpected lines, and we can thank the Uzbeks that they stopped playing at some stage and not trying to really push hard, or their finishing was as bad as it was. I think that's the saving grace in this game, because as I said yesterday, I think we will have more problems against a team like Uzbekistan with the way they play football, and this is something, again, we should be happy we're not playing Japan or Korea. I think that should be our saving grace, that we were in this group. This group is tougher than 2019, no doubt about that. But I would have said, I really don't see a development, and that's my concern. I would have thought, this squad, this coach, they could have done something, and I've been saying this for months. It's not that, and that, you guys know that, and I've never kept my opinions, to myself, but made them public. And I hate to say today, I told you so.
right? And this is something, a lot of work needs to be done, and it's not just, it makes no sense to to look at stats and try and pick out things and say this and that and everything. It makes no sense. It makes no sense. You have to bluntly say that we are playing against teams against whom we cannot compete. Period. That's what my learning is from the last 2 matches, sadly. Definitely. So there are a lot of things happen, guys, and I think हम उसके बारे में कल भी बात करेंगे obviously, and I think for now it's मतलब एक क्या बोलते हैं कि enough है. I think 3-0 loss India first, and I think आप सबको भी थोड़ा सा soak up करने के लिए time चाहिए. I think हमको भी चाहिए. So thank you very much for joining, guys, and do check out to Sport Khabri, Arun Foot and Curiosity तीनों चैनल को like से सब्सक्राइब कीजिए. एंड कल बात करेंगे, कल डर्बी भी है, कोलकाता डर्बी भी है, सो सुपर कप में इंटरेस्टिंग मैच है, सो आई थिंक उसको भी हम जरूर यहाँ पे कवर करेंगे, पोस्ट मैच भी करेंगे, सो वहाँ पे जुड़ेगा. और ऑब्वियसली कल भी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस मैच के बारे में थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि टाइम जाएगा तो थोड़ा सा थॉट भी आपके चेंज होंगे, सो आई थिंक उसके बाद उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस हो सकते हैं. अभी तो आप मतलब जस्ट मैच के बारे में बात कर सकते हो, बट लेट होप सो कल थोड़ी सी और ज्यादा हमें क्या बोलते हैं पॉजिटिव बातें करने को मिले. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.